Okay. Okay, from today onwards, we are going to start our economic session uh, for the upcoming prelims, OPSC. Okay, and ଯେହେତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ମୁଁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ concepts, actually you are a little bit acquainted with all the concepts in economics. Okay, so this is not a platform to get into to get much deeper into the concepts. Okay, but still, the concepts which are highly relevant from exam point of view, I will help you understand from a technical point of view. Okay, technically, ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଗୁଡାକ highly relevant from exam. So let me share the PDF first. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି PDF ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Sir. Okay, fine. So, okay. So without further ado, let's begin our class. Class with नौटारे बंद हो जाए पारे किंबा 9:30 जाए भी एक्सटेंड हो पारे क्लास. तो देखिबा जदि समय जदि न होउची ताले हमें नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स जदि हबो पाखापाखि 3 घंटा क्लास भी नहीं. Okay, so patience सहित बसिबे. Fine. Okay, so basics of economics. Let's start with the basics of economics. First of all, we need to understand some terms with respect to basics of economics. The first term is goods. What are goods? See, goods are those things which are tangible in nature. Tangible माने जोटी आपण बुझी परिबेनी मते पचारिबे हला. तो मु कहि जाउची आपण माने सुनि जानतु जोटी बुझी परिबेनी मते पचारिबे. Fine. Goods are those things which are tangible in nature. ता माने tangible माने आपण goods को touch करि परिबे, feel करि परिबे. You can touch them and you can feel them. Our goods को आपण store भी करि परिबे. You can also store them, and goods have a shelf life. Goods have a shelf life. ता माने ताकर गोटे expiry date थाए जो डेट पर से goods गुडा को expire कर जानते बुझ पर लेते they have a shelf life. बुझ परछन shelf life माने कोन? Okay. Now these are goods. Now what are services? What are services? Services are intangible. Services are intangible. That means you cannot touch and feel them. आपण टच करि परिबेनी, फील करि परिबेनी. कोन? हेलो किए? हेलो किए? हेलो किए कहले बे? जार माइक अनम्यूट अछि प्लीज म्यूट करंतु. हेलो. Services are intangible. Intangible माने आपण ताको टच करि परिबेनी, फील करि परिबेनी, किंतु आपण सर्विसेज को एक्सपीरियंस करि परिबे. You can only experience the services. And एठी आपण को आ गोटे पॉइंट बुझिबा दरकार जे सर्विसेज आर कंज्यूम्ड at the point of delivery. Services are consumed at the point of delivery. ता माने जो पॉइंट रे गोटे सर्विस डिलीवर होची सेही पॉइंट रे ही सर्विसेज गुडा को कंज्यूम हे जाय. किंतु goods are consumed over a period of time. Goods को गोटे period of time, over a period of time consume करा जाए, whereas services are consumed at the point of delivery. मु आपन को वर्तमान गोटे सर्विस डिलीवर करूची, मु जो पॉइंट रे डिलीवर करूची सेही पॉइंट रे ही सर्विस टा कंज्यूम हे जाउची. And services cannot be stored. You cannot store services, and they do not have a shelf life. They do not have a shelf life. And sometimes they are also called as abstract products.
सर्विसेज को आमे एब्स्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स बोली भी कहू और गुड्स को आमे फिजिकल प्रोडक्ट्स बोली भी कहू. Physical products are called as goods, whereas abstract products are called as services. Now, what are needs? Needs कौन? What are needs? Needs are those things. Needs are the basic minimum necessities. जो मनकर माइक अनम्यूट अच्छी प्लीज म्यूट कर दियंतु. Okay. Now, what are needs? Needs are the basic minimum necessities required to survive with dignity. जो जिनस गुड़ाक आमको सर्वाइव डिग्निटी सहित बंचिबा पई सहाय्य करंती सेही जिनस गुड़ाक आमे कहू नीड्स. नीड्स आर द बेसिक मिनिमम नेसेसिटीज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव विथ डिग्निटी एंड नॉट मियरली एनुअल एक्जिस्टेंस. केवल पशु भली बंचिबा नुहे, डिग्निटी सहित बंचिबा पई हमको जहा जहा दरकार ताको आमे कहू नीड्स. फॉर एग्जांपल जेमिति फूड. फूड हमको केवल बंचिबा पई ही दरकार, किंतु डिग्निटी सहित बंचिबा पई हमको कोन दरकार? क्लोथ भी दरकार, शेल्टर भी दरकार, sanitation, good education, clean drinking water, all these things become needs. Why? Because we need these things to survive with dignity. These are the needs. Now, what are wants? Wants are those things which help to improve the quality of your life. Wants are not required to survive with dignity, but wants help a person to improve the quality of his or her life. तमने wants help you live a luxurious life. जदि आपण सपोज वर्तमान ऑफिस को जाउछंती किंबा आपण कोठी भी जाउछन चल चली जाउछंती, किंतु आपण को सपोज वर्तमान गोटे गाड़ी मिल गेल. A bike, a two-wheeler is not required for you to survive, but it may improve the quality of your life. It may improve the standard of your life. It may help you live a luxurious life. Those are the wants. तामाने थोड़े आपण को needs fulfill हे गला परे wants actually comes into the picture. Wants picture को आसे. किंतु वॉन्ट्स आसिया पूर्वरु आपण प्रथमे जे कोनसी लोक हो ताकू नीड्स प्रथमे फुलफिल करबा को ही पड़ियो, बिकॉज़ दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव विथ डिग्निटी. बुझी पारले व्हाट आर वॉन्ट्स? नाउ रिसोर्सेस. व्हाट आर रिसोर्सेस? ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द इकोनॉमिक लिटरेचर. Resources are the goods. Resources are the goods that are used to produce other goods and services. तामने जो जिनस गुड़ा को आमे यूज करिकी, जो गुड्स को आमे यूज करिकी अन्य गुड किंबा सर्विस प्रोड्यूस करूचे ताकू आमे कहू रिसोर्स. फॉर एग्जांपल लैंड. लैंड इज अ रिसोर्स बिकॉज वी यूज लैंड टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सर्विस. सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स ताको आमे रिसोर्स एथि पई कहूछु बिकॉज लेबर इज यूज्ड, ह्यूमन लेबर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ गुड और अ सर्विस. Similarly natural resources. Natural resources are resources because they are used to produce other goods and services. Similarly, minerals, they are also called resources because minerals are used to produce other goods and services. Similarly, time, money, forest resources, cotton, jute, machines, tools, skills, all these are called resources because we use all such things to produce other goods and services. तामाने जो गुड्स को यूज करके हमें अन्य गुड्स किंबा सर्विस प्रोड्यूस करू ताकू हमें रिसोर्सेस कहू. Resources, you can see here, you can see in the PDF, resources are categorized into 4 factors. All the resources, whatever resources we have on earth, all the resources are categorized into 4 factors such as land, labor, capital and entrepreneur. तामाने हमें जे कोनसी गुड किंबा सर्विस को प्रोड्यूस करबा को चाहूचे एई चारिटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके ही हमें प्रोड्यूस करि परिबा. बुझ पारले? तो मु एबे जते आपन को कहली, जते पूरा रिसोर्स कहली, लैंड कहली, मिनरल्स कहली, फॉरेस्ट रिसोर्सेस कहली, कॉटन कहली, जूट कहली, they all come under the category of land. For similarly human resource, they come under the category of labor. तापर मु आपन को टाइम कहली, मनी कहली, स्किल कहली, they come under the category of capital. And entrepreneur is also a human resource. You can see here the above 4 factors of production. The above 4 factors are called as factors of production in economics. Now, why does economic problem arise? हमको प्रथमे जानिबा को पड़िबो why does economic problem arise. जानिबा पूर्वरु हमको जानिबा को पड़िबो what is that economic problem. को economic problem विषय हम एटी कथा होछ. What is that economic problem? आपण जानिथिबे there are unlimited wants. जो wants लोक मान को जो wants अछि
सेगुड़ा को अनलिमिटेड थाए सेगुड़ा अनलिमिटेड वांट्स आर अनलिमिटेड किंतु से वांट्स को फुलफिल करबा पई हम पाखरे जो रिसोर्सेस गुडा को अछि से रिसोर्सेस होची लिमिटेड जहां भी रिसोर्सेस व्हाटएवर रिसोर्सेस वी हैव एट आवर डिस्पोजल आर लिमिटेड but the wants we have the wants humans have they are unlimited सेति पई आन गोटे पटे अछि अनलिमिटेड वांट्स आ गोटे पटे अछि लिमिटेड रिसोर्सेस ताहले लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करिकि हमें अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करा जाय परिबो नाही एटा ही होची द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ता माने अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड वांट्स भितरे गोटे कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होची there is unlimited wants and there is limited resources yango bhitere gote conflict सृष्टि होची and that conflict is the most basic fundamental economic problem ता माने प्रॉब्लम ता कोन प्रॉब्लम होची लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करिकि हमें अनलिमिटेड वांट्स केमिति फुलफिल करिवा दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और दिस इज द फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू रिजॉल्व हमको ए फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिया को पड़िबो नाउ सी जेहेतु अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस भितरे कॉन्फ्लिक्ट गोटे सृष्टि होची ए कॉन्फ्लिक्ट गोटे प्रॉब्लम को सृष्टि करूची से प्रॉब्लम रो ना होची प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस याको कुआ जाय से प्रॉब्लम को कुआ जाय प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस नाउ ए प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस कोन याको बुझिया पूर्वरु हमको जानिया पड़िबो व्हाट इज ट्रेड ऑफ को बुझला पर हम जीवा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस को तापर हम जीवा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट Now, what is trade-off? Trade-off means trade-off माने होची है giving up one benefit to get another benefit. ता माने होची आपन पकरे मु सिंपली वे आपन बुझौ छ एग्जांपल देखि देखंतु जदि आपन पकरे आपन जदि गोटे जिंस चाहउचंती ताहले आ गोटे जिंस आपन को सैक्रिफाइस करिवा को पड़ो जदि आपन A चाहउचंती then you have to sacrifice B if you want B then you have to sacrifice A this is called trade off याको ही कुआ जाय trade off if you want something you have to sacrifice something else if you want something else then you have to sacrifice the first option which is available at your disposal आपण माने बुझी परछन ना बुझी परनथि हेलो हेलो Yes, sir. okay fine the trade off kono trade off is if you it means trade off means giving up one benefit to get another benefit for example आपन पाखरे 2 घंटा समय अछि से 2 घंटा भितरे आपन पाखरे दीटा ऑप्शन अछि आपन आइदर परीक्षा पाखे आसलानी आपन आइदर से 2 घंटा को पढिबा पे यूज करि परिबे किंबा गोटे न्यू फिल्म गोटे रिलीज हेची से फिल्म को देखिया को भारी मन अछि आपन से फिल्म को देखि परिबे किंतु से 2 घंटा रे आपन पाठ आइदर पाठ पढि परिबे किंबा फिल्म देखि किंतु दीटा एक सहित करि परिबे नाही काहे की करि परिबेनी काहे की ना आपन पाखरे लिमिटेड टाइम अछि ता माने आपन पाखरे लिमिटेड रिसोर्स अछि रिसोर्स लिमिटेड अछि किंतु आपन पाखरे वांट्स बेसी अछि you have two wants to fulfill but you have limited resource in terms of time that is 2 hours 2 घंटा आपन पाखरे समय अछि आपन आइदर पाठ पढंतु किमा मूवी देखंतु किंतु दीटा एक सहित करि परिबे नाही ताहले आपन जदि आइदर पाठ पढिबे ताहले मूवी को सैक्रिफाइस करिया पड़िबो जदि मूवी देखिबे ताहले आपन को पाठ को सैक्रिफाइस करिया को पड़िबो दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ आको ही कुआ जाय ट्रेड ऑफ नाउ comes the problem of economic choice तो आपन पाखरे लिमिटेड टाइम अछि आपन आइदर पाठ पढिबे किमा मूवी देखिबे ताहले कोटा चूज करिवे ताहले को वांट को आपन फुलफिल करिवा को चूज करिवे आपन पाखरे लिमिटेड रिसोर्स अछि आपन पाखरे अनलिमिटेड वांट्स अछि ताहले को वांट को आपन फुलफिल करिवा को चूज करिवे दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस याको ही कुआ जाय प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस तारे किमि चॉइस करिवे किमि चॉइस करा जाय कोटा चूज करिवे भाबुचंती आपन मन हेलो बोधे अन्य प्रीवियस सेशन रे बोधे आपन माने बेसी इंटरैक्टिव नथिले बोधे ना इंटरैक्शन होतला टीचर मानक सहित Sir, interaction होतला तर Yes, ठीक sir. अछि त ओके फाइन ताहले मते कहंतु ताहले कोटा चूज करिवे आपन पाठ पढिबाटा चूज करिवे ना फिल्म देखिबाटा चूज करिवे किछ नै जे ऑडियो थ्रू रु माने आंसर देबा को चाहनंती से माने चैट बॉक्स लिखि पारंती किछ असुविधा नै ओके मु भी चाहूची कोन कि आपन टिके इंटरैक्ट करंतु
नहले बहुत मोनोटोनस हो जाउची क्लासेस गुडा कोडा चूज करिवे पाठ पढ़िया चूज करिवे ना फिल्म देखिया चूज करिवे जोटा गोटे ही चूज करियो गोटे गोटे ही चूज करिवे ताहले आपण कोडा चूज करिवे ओके देखंतु द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस इज रिजॉल्व्ड थ्रू अ कांसेप्ट कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आखि आगे रखी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आखि आगे रखिकी a problem of economic choice को solve करा जाए. Now the question is what is opportunity cost? Opportunity cost is the value of next best alternative cost that has been sacrificed. Opportunity cost is the value of the next best alternative cost that has been sacrificed. तामाने आपण पाखरे वर्तमान दीटा ऑप्शन अछि आइदर आपण मूवी देखिबे किंबा पाठ पढिबे जदि आपण मूवी देखुचंती ताले मूवी देखिवार अल्टरनेटिव आपण पाखरे कोन अछि व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू वाचिंग अ मूवी आपण पाखरे मूवी देखि आपण मूवी देखिबे जदि आपण पाखरे बेस्ट अल्टरनेटिव कोन अछि पाठ पढिबे जदि आपण पाठ पढिबे ताले आपण पाखरे बेस्ट अल्टरनेटिव कोन अछि मूवी देखिबे ता माने जदि आपण मूवी देखुचंती देन यू हैव टू sacrifice studying जदि आपण पाठ पढुचंती then you have to sacrifice watching a movie that means the opportunity cost of watching a movie is to sacrifice your studies the opportunity cost of watching a movie is to sacrifice your studies and the opportunity cost of studying for 2 hours is to sacrifice watching a movie बुझी पारले what is opportunity cost होची कोन the next best alternative that is sacrificed मूवी देखिवार अल्टरनेटिव आपन पाकर कोन अछि पाठ पढिवार अल्टरनेटिव आपन पाकर कोन अछि मूवी देखिबे जदि आपन मूवी को देखुचंती ताहाले तार जो अल्टरनेटिव आपन पाकर थिला पाठ पढिबा ताको आपन सैक्रिफाइस करिया पड़िबो सो मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होची गिविंग अप ऑन योर स्टडीज पाठ पढिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होची सैक्रिफाइसिंग वाचिंग अ मूवी ताहाले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आखि आगे रखिकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुझिकी हमें ये जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस अछि ताको केमिति रिजॉल्व करू केमिति सॉल्व करू देखो एबे एग्जाम पाखे आसिलानी जदि आपण पाठ न पढिबे ताहले कोन हो फेल हेजि आपण फेल हेजि जदि एग्जाम पाखे आसिलानी जदि आपण पाठ न पढुचन ताहले फेल हेजि जदि मूवी देखुचंती ताहले आपण माइंड टा रिफ्रेश होबो किंतु माइंड टा रिफ्रेश होबार बेसी आवश्यकता अछि बुझ पाले आपन को पाठ पढिबा ताहले जदि आपण आज मूवी देखु नहंती ताहले कोन काली देखि देबे तार ऑप्शन अछि किमा परीक्षा सरला पर देखि देबे किंतु जदि आपण आज पाठ पढु नहंती ताहले परीक्षा आसंता परीक्षा रे फेल हिजबे आपण दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाचिंग अ मूवी इज टू गेट फेल्ड इन द एग्जाम एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स is you being unable to refresh your mind ताहले एठी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई कार हाई अछि मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई ना पाठ पढिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई कोन भाबुछन आपण इट इज प्योरली सब्जेक्टिव सेंस रे आपण कोहंतु बुझंतु आ कोहंतु जे मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई मूवी जदि देखिबे आपण परीक्षा रे फेल हिजिबे सेटा होची आपनकर मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जदि आपण पाठ पढुचंती ताहले आपण माइंड टाको रिफ्रेश करि परिबेनी एटा होची पाठ पढिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ताहले कहार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई ना पाठ पढिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मूवी देखिबार मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई काहे कि जदि आपण मूवी देखिबे ताहले आपनकर कोन होबो you might get failed in the exam so the opportunity cost of watching a movie is to get failed in the exam that means the opportunity cost is very high जदि मूवी देखिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई ताहले आपण कोन चूज करिवे कोटा चूज करिवे you will choose to studying for 2 hours आपण पाठ पढिबाटा चूज करिवे ना कि मूवी देखिबा सिमिलरली जेतबेले कोरोना पई लॉकडाउन अनाउंस हेतिला गवर्नमेंट पाखरे लिमिटेड पैसा थिला गवर्नमेंट हैड लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ मनी गवर्नमेंट पाखरे लिमिटेड पैसा थिला गवर्नमेंट सेही पैसा को आइदर डेवलपमेंटल पर्पस पई खर्च करि परिबो किंबा लोक मानकर जीवन रक्षा करिवा पई लोक मानकर लाइफ को सेव करिवा पई से पैसाटा खर्च करि परिबो वर्तमान मते कहंतु गवर्नमेंट
कहा पई से पैसा खर्च करियो गवर्नमेंट हैज लिमिटेड रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ लिमिटेड कैपिटल दैट इज मनी the government has two options either the government can spend the money for the purpose of development or the government can spend the money on vaccination to save lives from corona ताले एठी गवर्नमेंट कौन चूज करियो Vaccination. vaccination कौन में vaccination चूज करियो why the government will choose to vaccinate people why the government will go for vaccination Because human resource is more important. because the opportunity cost of spending the money on developmental purpose is very high the opportunity cost of spending the money on developmental purpose is very high ताले एटी जदि गवर्नमेंट पैसाटा डेवलपमेंटल पर्पस में खर्च करिवो ताले तार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग द मनी ऑन डेवलपमेंटल पर्पस Sacrificing human resource. sacrificing human lives is the opportunity cost of spending the money on developmental activities अरे डेवलपमेंट उपरे ए वर्ष नहले आरो वर्ष भी गवर्नमेंट करि परियो किंतु जदि ए वर्ष जीवन पळे लोकंकर जदि जीवन पळे लगल गवर्नमेंट ताको फेरि परियो this is how actually the problem of economic choice is resolved by taking into consideration the opportunity cost जेतु डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रे खर्च करिवार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई सेति पई गवर्नमेंट कोन चूज करिवो टू स्पेंड द मनी ऑन वैक्सीनेशन सो दैट द गवर्नमेंट कुड सेव द लाइव्स ऑफ पीपल बुझी पाछन ना बुझी पाउनंती दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दीज आर द कॉन्सेप्ट्स now classification of economics now economics can be classified into microeconomics macroeconomics positive economics and normative economics so what is microeconomics समस्त जानिथिबे microeconomics studies the behavior and decisions of individual units in an economy direct example देखंतु जो इंडिविजुअल यूनिट्स अछंती फॉर एग्जांपल सिंगल इंडिविजुअल सिंगल पर्सन हे गला गोटे सिंगल हाउस होल्ड हे गला किंबा गोटे सिंगल मार्केट हे गला किंबा सिंगल गोटे प्रोडक्शन यूनिट हे गला प्रोडक्शन यूनिट एमानकर इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करवाटा होची माइक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक बिहेवियर whenever the economists study the behavior and decision of individual units in an economy that study comes under the category of microeconomics for example जेमिति कंज्यूमर्स हे गले हाउस होल्ड्स हे गले फर्म्स हे गले इंडस्ट्री हे गले बुझ पड़ले see here see the example here example होची imagine there is a sudden increase in the demand for smartphone रो demand बढ़ी वाला मार्केट रे ताले माइक्रो इकोनॉमिक्स कोन स्टडी करिवो how the consumers decide whether to buy a new phone at current prices जेतबळे कंज्यूमर गोटे सिंगल इंडिविजुअल डिसाइड करूची मु न्यू आईफोन किनिबा दरकार ना नुहे दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्म्स माने डिसाइड करंती जे तो माइक्रो स्मार्टफोन रो डिमांड बढ़ी जाईची whether to produce much more whether to increase the quantity of smartphones so that we can meet the demand of the people also come under the category of microeconomics गोटे सिंगल मार्केट रो जतले इकोनॉमिक बिहेवियर को आपण स्टडी करूचंती सिंगल मार्केट हे गला किबा सिंगल पर्सन हे गला किबा सिंगल हाउस होल्ड हे गला जेतले आपण जे कोनसी गोटे सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी रो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करूचंती सेही बिहेवियर दैट बिहेवियर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ microeconomics whereas macroeconomics studies the economy as a whole for example when the government increases its spending to stimulate economic growth जब गवर्नमेंट तार स्पेंडिंग ता बढ़ाए whenever the government increases its spending कोन गवर्नमेंट केवल ता निज पई गवर्नमेंट जतले पैसा खर्च करूची से एंटायर कंट्री पई पैसा खर्च करूची जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर पैसा खर्च करूची जो स्कूल्स ऊपर पैसा खर्च करूची हेल्थ केयर ऊपर खर्च करूची इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर खर्च करूची that benefits the entire country and not a single individual not a single economic entity but the entire country जेतबळे गोटे एंटायर कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू रू गवर्नमेंट जे कोनसी गोटे डिसीजन निये ताकू कुआ जाय मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस वी कॉल इट एज मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस जेतबळे हमें अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करू
we study the rate of unemployment of the entire country. So unemployment as a part of economics comes under the category of macroeconomics. Whenever we study inflation, inflation reflects the rise in prices of goods and services in the country. So since we are studying inflation by taking into account the goods and the prices of goods and services of the whole country, it also comes under the category of macroeconomics. When we study poverty, it shows how many people in the country are below the poverty line. So whenever we study poverty, poverty also comes under the category of macroeconomics because it is studied from the entire nation's point of view or from the entire country's point of view. I think okay. Now, what is positive economics? Positive economics, positive economics is based on facts. Positive economics is based on facts, or you can say empirical data and cause and effect relations. Whereas normative economics is based on opinions. For example, what is positive economics? Positive economics is based on facts. Now, what do you mean by this? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଦେଶର population ହଉଛି 100, suppose ଆମ ଦେଶରେ 10% population is below the poverty line. Whenever I say that 10% of the population is below the poverty line, tamane this figure 10% population is below the poverty line is a fact. Eta hochi gote fact. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି 10% of the population is below the poverty line, it's a fact. Eta କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ fact? କାହିଁକି ନା ଆମେ ୟାକୁ prove କରିପାରିବା. We can prove that 10% of the population is below the poverty line. Since we can prove it, it's a fact. And since it's a fact, it comes under the category of positive economics. Positive economics केवल facts को study करे. अब facts कोठु आसे? Facts आसे empirical data रू आसे fact. जेहेतु data रू facts आसे, सेति पई हमें facts को prove करि परिबा. And since we can prove the facts, it is called as, it comes under the category of positive economics. Now, what is normative economics? Normative economics, anything which is based on opinion of somebody, that comes under the category of normative economics. Normative economics are not based on facts. You cannot prove the opinion of somebody. आपण गोटे लोकर ओपिनियन को प्रूव करि परिबेनी, आपण फैक्ट को प्रूव करि परिबे. जेहेतु आपण फैक्ट को प्रूव करि परिबे, सेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अंडर आछि. आपण जेहेतु ओपिनियन को प्रूव करि परिबेनी, ओपिनियंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स. जेहेतु ओपिनियंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, whereas facts are objective in nature. For example, दीटा इकोनॉमिस्ट अछंती जो माने कि पोवर्टी को डीपली रिसर्च करछंती. दीटा इकोनॉमिस्ट अछंती जो माने पोवर्टी को डीपली रिसर्च करछंती. तो गवर्नमेंट कोन करला, गोटे इकोनॉमिस्ट को कहला, प्लीज मेजर द हेड काउंट रेशियो इन इंडिया. ता माने हेड काउंट रेशियो माने होची केते लोक एक्चुअली देश रे गरीब अछंती, केते परसेंट लोक देश रे गरीब अछंती. प्लीज मेजर दिस. तो से लोक कोन करला, डेटा कलेक्ट करला, डेटा को स्टडी करला, एनालाइज करला, तापर गोटे कंक्लूजन बाहर करला जे 10% of the population in India is below the poverty line. Now this is a fact. You can prove this fact. तापर आउ गोटे इकोनॉमिस्ट, सेकंड इकोनॉमिस्ट जो थिला, से गवर्नमेंट को कहूची जे given the development of the country, 10% population is below the poverty line. This figure is too high. It is not tolerable given the development of the country. देशर वर्तमान जो डेवलपमेंट सिचुएशन, इंडिया इज a highly developing country. So given the development of the country, second economist कोन कहूची that 10% population is living below the poverty line. This rate of poverty is too high. ता माने गवर्नमेंट ताको पचारला, ताले आपन को ओपिनियन रे रेट ऑफ पोवर्टी केते हवा दरकार. से कहूची अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन द रेट ऑफ पोवर्टी शुड रेंज बिटवीन 2 to 3%. आम देशर माने जो डेवलपमेंट सिचुएशन अछि, से सिचुएशन को देखि कि मो ओपिनियन होची द रेट ऑफ पोवर्टी शुड बी इन द रेंज ऑफ 2 to 3%. किंतु एटा होची तार ओपिनियन.
एटा होची तार ओपिनियन आपण याकू प्रूफ करि परिबेनी से कहूची अकॉर्डिंग टू हिम द रेट ऑफ पॉवर्टी शुड बी बिटवीन 2 to 3%, किंतु याकू आपण प्रूफ करि परिबेनी बिकॉज़ दिस इज जस्ट सिंपली अ ओपिनियन। किंतु जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कहितला द 10% पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, दिस इज अ फैक्ट, यू कैन प्रूव इट, सो इट इज पॉजिटिव, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, whereas normative economics is based on opinion. But you need to understand something here. You need to understand very important point, that both positive economics and normative economics helps the government to frame policies for the development of the country. I repeat, both positive economics as well as normative economics helps the government to frame policies for the development of the country. केमती जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट कहला 10% of the population is below the poverty line, it is a part of positive economics. Second economist कहला that 10% rate of poverty is too high given the development of the country, the rate of poverty should be in the range of 2 to 3%, this is a part of normative economics. ताहेले गवर्नमेंट एटी कोन करला, सेकंड इकोनॉमिस्ट को पचारला जो रेट ऑफ पॉवर्टी वर्तमान 10% अछि ताकू कमे कि आमे 2 to 3% रेंज भीतर केमिति नै कि आसीबा हमकु सजेशन दियंतु। तापर सेकंड इकोनॉमिस्ट जहां भी सजेस्ट करिवो से सजेशन को आख्या करे रखी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करिवो एंड विल ट्राई टू रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 10% to 2 to 3%. This is how actually positive and normative economics helps any government across world to frame policies for the development of the country. एति कि बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this is normative economics. Normative economics, these are based on opinions, cannot be proven right or wrong by facts alone. The government should provide free healthcare to all citizens. This is an opinion. This is an opinion. Taxes on luxury goods should be increased to reduce inequality. This is an opinion. Subsidies for farmers should be higher. This is an opinion. So all the opinion-based judgments or statements, they are part of normative economics. Whereas all the fact-based statements, they are part of positive economics. I repeat, both positive and normative economics helps the government to frame policies for the development of the country. Timothy, I have an example already. Okay, fine. Now, the basic economic problem. Now let's understand what is the basic economic problem. We have unlimited wants, but to fulfill those unlimited wants, we have limited resources. तो सेति पई ए दीटा भितरु ए दी जन को भितर गोटे प्रॉब्लम गोटे कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होची गोटे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होची दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स गिव राइज टू three fundamental economic questions and the three fundamental economic questions are what to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce, how to produce, and for whom to produce. These are the three fundamental economic problems, questions, which arise from the conflict between limited resources and unlimited wants. Now, what do you mean by this? What to produce, how to produce, for whom to produce? See here, जो limited resources अच्छी, प्रथमे हम बुझिबा what to produce. जो limited resources अच्छी, से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके आपण को प्रकार रो गुड्स प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती। आपण बेसी रो बेसी लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती ना आपण बेसी रो बेसी नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती ना आपण बेसी रो बेसी मिलिटरी गुड्स प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती। को प्रकार गुड्स ना बेसी रो बेसी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती। फॉर एग्जांपल मशीन्स टूल्स हे गन को प्रकार गुड्स आपण बेसी प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती। जेतो हम पर लिमिटेड रिसोर्स in a country like India, given the limited nature of resources, आपण मन भीतर के कहि परिबे what kind of goods India should produce more, luxury goods or necessary goods, military goods or capital goods. हम पर लिमिटेड रिसोर्स अछि, लिमिटेड रिसोर्स को यूज करिकि हमें कोन प्रोड्यूस बेसी प्रोड्यूस करबा दरकार को प्रकार गुड्स को प्रकार गुड्स बेसी प्रोड्यूस करबा दरकार। In a country like India, we need to produce more and more necessary goods. किंतु ता माने नुहे जे हमें केवल नेसेसरी गुड्स ही प्रोड्यूस करिबा
आम नेसेसरी गुड्स सहित किसी क्वांटिटी लग्जरी गुड्स भी प्रोड्यूस करिवा, किसी क्वांटिटी ऑफ मिलिटरी गुड्स भी प्रोड्यूस करिवा, किसी क्वांटिटी ऑफ कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूस करिवा. But given the situation, economic situation of our country, we need to produce more and more necessary goods. Okay. So this is the first economic problem, what to produce. ये what to produce रो question टा बुझी पारले समझते हैं. This is the first economic problem. हम पाखे लिमिटेड रिसोर्स अच्छी, अनलिमिटेड वांट्स अच्छी, तो लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके हमें को प्रकार गुड्स प्रोड्यूस करवा दरकार. दैट इज द फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम. थरे आपण डिसाइड कर सारला परे आपण बेसी रो बेसी नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करबा को चाहउछंती ना मिलिटरी गुड्स ना लग्जरी गुड्स ना कैपिटल गुड्स. थरे आपण डिसाइड कर देला परे तापर सेकंड क्वेश्चन होची हाउ टू प्रोड्यूस देम. हाउ टू प्रोड्यूस, whether to produce those goods and services by using more of labor intensive technology or to produce those goods and services by using more of capital intensive technology. Suppose India decide करला जे we are से हम पाखे limited resource अच्छी और से limited resources को use करके हम बेसी रो बेसी necessary goods produce करियो. necessary goods माने फॉर एग्जांपल केते प्रकार गुड्स नेसेसरी गुड्स अछि हमें जो डेली लाइफ रे जो गुड्स गुडा को यूज करू ऑल दोस गुड्स आर नेसेसरी गुड्स. हम डेली लाइफ रे हमें जहां भी गुड्स यूज करूछु 80% ऑफ द गुड्स आर नेसेसरी गुड्स. सपोज इंडिया डिसाइड करला हमें बेसी रो बेसी नेसेसरी गुड्स प्रोड्यूस करियो, ताहले आपण मानन को कोन लागुची वेदर वी शुड यूज मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस दोस गुड्स और वी शुड यूज मोर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस दोस गुड्स. तामाने बेसी रो बेसी लेबर को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करिवा ना कैपिटल को यूज करके से गुड्स को प्रोड्यूस करिवा. कैपिटल माने मशीन्स को यूज करके से गुड्स प्रोड्यूस करिवा. कोन लागु छै आपन मन लेबर व्हाई लेबर why do you think that India should use more of labor to produce goods and services and why not capital? Capital means here capital माने बुझंतु केवल मशीन्स बुझन कोन मशीन्स को यूज करके हमें गुड्स प्रोड्यूस करि परिबानी. से एठी आपन को बुझिया को पड़िबो जे अच्छा अमेरिका रे जो गुड्स गुडा को प्रोड्यूस हुए गुड किंबा सर्विस whether they use more of labor or more of capital to produce goods and services in America. In America more of capital, that means more of machines is used to produce those goods and services, whereas in India more of labor is used to produce the goods and services. कौन पाई या पे बहुत गुड़ा कारण अछि, but two significant reasons are first is labor is much cheaper in India compared to capital. Cost of capital, labor cost or cost of labor is much cheaper in India compared to capital. यदि आपण कैपिटल को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करिवे तले आपण को बहुत महंगा पड़िबो, हैला तो बहुत आपण को बहुत हाई कॉस्ट पड़ी जिवो काहे कि इंडिया रे लेबर चीप अछि तो लेबर को यूज करके प्रोड्यूस करिवो इंडिया गुड्स एंड सर्विसेज. बट इन अमेरिका द लेबर कॉस्ट इज very high. The labor cost is very high and the capital is cheap there. जेहेतु अमेरिका रे कैपिटल चीप सेति पे अमेरिकन्स कैपिटल को यूज करके से बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते. ऑन द टॉप ऑफ दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कौन कहती अनएम्प्लॉयमेंट. इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम a high rate of unemployment. So unemployment rate को आखि आगे रखिकी भी it is prudential for India to use more of labor to produce goods and services rather than capital. तो बुझी पारले वर्तमान बुझी पारछंती. प्रथम क्वेश्चन होची व्हाट टू प्रोड्यूस. जो लिमिटेड रिसोर्सेज हम पाखरे अछि से रिसोर्सेज को यूज करके हमें को प्रकार गुड्स प्रोड्यूस करिवा. द फर्स्ट इकोनॉमिक क्वेश्चन, फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन होची से गुड्स को हमें केमिति प्रोड्यूस करिवा. लेबर को बेसी रो बेसी लेबर को यूज करके प्रोड्यूस करिवा ना बेसी रो बेसी कैपिटल को यूज करके प्रोड्यूस करियो. किंतु इंडिया रे जानि थांतु बेसी रो बेसी लेबर को यूज करके प्रोड्यूस करिया पे चेष्टा करा जाय काहे कि ना इंडिया रे लेबर कॉस्ट बहुत चीप थाए कंपेयर टू कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को कौन कहा जाए जब एग्जाम रे केबे पळे आसे मन रखि थांतु. लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को कहा जाए कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी. वी आल्सो कॉल इट एज कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी. आउ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को कहा जाए लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी. ओके. जस्ट एटा मन रखि थांतु एग्जाम रे जदी बुले कि जदी पछारला ताले आपण पुनी हैरान. Now the third fundamental economic question is for whom to produce. For whom to produce. This is the one of the most important economic question. One of the most significant question
in entire economics. आम पाखे जहाँ भी गुड्स अच्छी आम डिसाइड कले नेसेसरी गुड्स आम प्रोड्यूस करी तापर आम डिसाइड कले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करके आम से गुड्स गुड़ाक प्रोड्यूस करी थर्ड हूँ क्या प्रोड्यूस करेंगे क्या प्रोड्यूस क्या लगुच प्रोड्यूस करा क्या प्रोड्यूस करेंगे क्या आपण प्रोड्यूस करा ना मो प्रोड्यूस करा क्या प्रोड्यूस करा ना केवल रिच लोक प्रोड्यूस करा ना केवल गरीब लोक प्रोड्यूस करा ना मिडिल क्लास लोक प्रोड्यूस करा क्या प्रोड्यूस करा भावुँ क्या प्रोड्यूस करा the goods and services which are produced in any economy is produced for the people. Listen carefully. The goods and services which are produced in any economy is produced for the people who have the ability to pay for those goods and services. जो मानक पाखरे पे करिवार क्षमता थिबो पे करिवार क्षमता थिबो केवल से मानक पाई ही goods and services produce करा जाए बुझी पारुछन ना बुझी पाउ नांती It is the third question, third fundamental economic question lekha hai for whom to produce. Your answer hochi in any economy the goods are produced, the goods and services are produced for those people who have the ability to pay for those goods and services. जो मानन पाखरे पे करिवार क्षमता थिबो केवल से मानन पई ही प्रोड्यूस करा जाए ताहले एटी क्वेश्चन आछी जो मानन पाखरे पे करिवार क्षमता नाही से मान कोन करिवे व्हाट विल हैपन टू दोस पीपल से मान कोन हो से मान कोन हो what will happen to those people कौन करा जीवो से मानन पे से मान कौन ही जीवो से मान मशानी को जीवे बुझ पाछन तो that means they will pay if those people who do not have the ability to pay for themselves those people who do not have the ability to pay they will be left to fend for themselves they will be left to fend for themselves ता माने होची जो मानन पाखरे पे करिवार एबिलिटी नाही से मानन पई मरिबा पे छाड़ दिया जी This is true because economics doesn't care about people. Economics doesn't care about value judgments. Economics केबे भी value judgments को care करे नहीं किए मरिला किए बंचिला it doesn't economics doesn't care. सेठी पाई जहाँ भी goods हमें produce करू से गुड़ा को से लोगों को पाई ही produce करा जाए जो मानन पाखरे pay करिवार ability था जो मानन पाखरे pay करिवार ability नहीं से माने either seven कौन होबे that they have only one option they will perish from the they will perish सेमाने simply कौन सेमाने मर जिवे बुझ पाछंती सेठी पाई कौन कराई छी now here comes the role of government जदी न था जदी government न था if the government is not present then the people who do not have the ability to pay for the goods and services they will simply perish सेमान कौन होबे मरि ही जिवे सेठी पाई जो वेलफेयर प्रोग्राम्स गवर्नमेंट गुडा को लॉन्च करूची सेई वेलफेयर प्रोग्राम्स गुडा को सेई परी लोकन पाई लॉन्च करूची गवर्नमेंट जो मानन पाखरे एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज केनिवार क्षमता नाही जो सब्सिडी दिटंकिया चावल जो दोउची कोन लोकन दिटंकिया चावल जो दोउची फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करूची तापरे जो इंदिरा आवास योजना रे जो फ्री शेल्टर प्रोवाइड करूची फ्री फूड प्रोवाइड करूची सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड करूची कोन प्रोवाइड करूची आम देश रे एमती बहुत लोक अच्छे जो माने दी होली खाइबा को भी जोगई पारि माने तांग पाखरे खाइबा को पैसा नाही जदि सेमान को जदि केवल एई भरोसा रे छाड़ दिया जीवो जदि सेमाने पे करिवे ताले ही बंचिबे आ जदि पे करिवे ताले मर जिवे ता सेमान सतरे मर जिवे here comes the role of the government because government is an entity whose motive is the welfare of the people whereas market is an entity whose motive is to earn profit I hope समस्त बुझी पारछंती hello Yes, sir. Yes. okay fine so for whom to produce the answer hochi only those people who have the ability to pay only for those people goods and services are produced and the people who do not have the ability to pay for the goods and services for them there is government तांक पई अछि government will take care of them now economic system come to economic systems see here एठी आपण बुझंतु ध्यान से बुझंतु
जो तीनटा इकोनॉमिक फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चंस अराइज हेची व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस जे कोनसी गोटे इकोनॉमी रे दीटा वाइटल प्लेयर थांती वाइटल इकोनॉमिक प्लेयर थांती in any economy there are two vital economic players one is your market गोटे होची market is one vital economic player another is your government is another vital economic player एबे जे कोनसी इकोनॉमी जे कोनसी कंट्री रे जदि मार्केट डिसाइड करूची मार्केट डिसाइड करिवो what to produce if any economy if the market is deciding what goods and services we are supposed to produce if a market is deciding how to produce those goods and services meaning whether to produce the goods and services by using more of labor intensive technology or whether to produce goods and services by using more of capital intensive technology जदि एक सेकंड क्वेश्चन को जदि मार्केट डिसाइड करूची and if the market is deciding for whom to produce then we call such an economy as a market economy we call such an economy as a market economy आउ थरे कहूची जे कोनसी इकोनॉमी जे कोनसी कंट्री रे ए जो तीनटा क्वेश्चंस अछि व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस जदि तीनटा क्वेश्चन रो उत्तर जदि मार्केट दोची if the market is deciding what to produce if the market is deciding how to produce and if the market is deciding for whom to produce we call such an economy as a market economy or you can say capitalist economy or you can say laissez-faire economy आपण एतिकी बुझंतु मार्केट इकोनॉमी किबा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कुहा जाय से इकोनॉमी को आउ जे कोनसी कंट्री रे जदि गवर्नमेंट डिसाइड करूची what to produce how to produce and for whom to produce we call such an economy as a command economy we call such an economy as command economy it lekha is dekhontu command economy what to produce how to produce and for whom to produce is determined by the government whereas in market economies what to produce is determined by the consumers preferences tamane market decide karuchi what to produce how to produce determined by producers seeking profits again market ही decide karuchi जे how to produce whether to use more of labor or whether to use more of capital given the cost of both the factors third for whom to produce determined by purchasing power tamane जो लोक मान पाखरे पे करिवार क्षमता अछि से मानक पई ही मार्केट प्रोड्यूस करूची जो मान पाखरे पे करिवार क्षमता नाही से मान पई मार्केट प्रोड्यूस करू नाही एते की बुझी पारले मार्केट इकोनॉमी कमांड इकोनॉमी आउ थरे कहूची जो इकोनॉमी रे मार्केट डिसाइड करूची तीनटा क्वेश्चंस रा आंसर मार्केट दोउची ताको हम कहू मार्केट इकोनॉमी किबा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो इकोनॉमी रे तीनटा क्वेश्चन रा आंसर गवर्नमेंट दोउची ताको हम कहू कमांड इकोनॉमी और यू कैन कॉल इट एज सोशलिस्ट इकोनॉमी यू कैन कॉल इट एज सोशलिस्ट इकोनॉमी आउ जो इकोनॉमी रे ए तीनटा क्वेश्चन रा आंसर बोथ मार्केट आउ गवर्नमेंट मिसी की दियंती market or government मिसिकी decide करंती what to produce how to produce and for whom to produce we call such an economy as a mixed economy like India is a mixed economy because in India both market as well as the government together decide what to produce how to produce and for whom to produce this is a mixed economy so India is a mixed economy but you must understand that India is a mixed economy with a leaning towards capitalism whereas China is a mixed economy with a leaning towards socialism. India in 1947 was a mixed economy with a leaning towards socialism. After 1990s, India became a mixed economy with a leaning towards capitalism. बुझी पारछंती ना बुझी पारलेनी जेते आपण मन चेहरा देखि पाउनी तुम आपण को एक्सप्रेशन देखि पाउनी तुम जानि पाउनी आपण बुझी पारछन बुझी पाउनी बुझी पारछन समस्त हेलो Yes, sir. okay fine fine so तो कौन कहबा हम सेमिता इकोनॉमी को जो इकोनॉमी रे मार्केट सब कुछ डिसाइड करूची what will you call such an economy where the market is deciding what to produce how to produce and for whom to produce
Sir, capital economy. Capitalist economy, or we can call it as market economy. बुझिपारे तामाने मार्केट से गुड्स ही प्रोड्यूस करिवो जो गुड्स रो मार्केट रे डिमांड अछि, जो गुड्स रो मार्केट रो डिमांड अछि, मार्केट्स केवल से गुड्स ही प्रोड्यूस करिवो। जदि लग्जरी गुड्स रो बेसी डिमांड अछि ताले मार्केट लग्जरी गुड्स ही प्रोड्यूस करिवो। नेसेसरी गुड्स जदि कम डिमांड अछि ताले मार्केट नेसेसरी गुड्स कम ही प्रोड्यूस करिवो। बुझिपारे काना मार्केट डिसाइड करछ, एंड मार्केट डिसाइड्स बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द पीपल। तापर मार्केट ही डिसाइड करिवो हाउ टू प्रोड्यूस, काना मार्केट को कोन दरकार, प्रॉफिट दरकार। ताले प्रॉफिट कोठु आसीबो, कॉस्ट कम करले ही प्रॉफिट आसीबो। ताले जदि लेबर कॉस्ट जदि लेबर चीप अछि ताले लेबर को यूज करके मार्केट प्रोड्यूस करिवो। जदि कैपिटल चीप अछि ताले कैपिटल को यूज करके मार्केट प्रोड्यूस करिवो। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मैं आपको ऑलरेडी बुझी सारलेनी, फॉर होम टू प्रोड्यूस द मार्केट विल प्रोड्यूस फॉर दोस पीपल हु हैव द एबिलिटी टू पे। सिमिलरली जो देश रे गवर्नमेंट डिसाइड करूची, गवर्नमेंट जो डिसाइड करिवो, जदि गवर्नमेंट को दरकार जे मु चाहूची बेसी रो बेसी मिलिटरी गुड्स प्रोड्यूस हो ताले गवर्नमेंट बेसी रो बेसी मिलिटरी गुड्स प्रोड्यूस करिवो। गवर्नमेंट डिसाइड करूची आई विल यूज मोर ऑफ लेबर ताले गवर्नमेंट डिसाइड माने बेसी रो लेबर यूज करके प्रोड्यूस करिवो। एंड गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट कहूची समस्त आमे जहां भी प्रोड्यूस करिवो सब लोकन पय प्रोड्यूस करिवो, जो माने पे करिवो, जो माने पाखरे पे करिवार एबिलिटी अछि किंबा नाही, डजंट मैटर, आमे जहां भी प्रोड्यूस करिवो समस्त पय प्रोड्यूस करिवो। इट इज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। सो वी कॉल such an economy as command economy, or we can call it as a communist economy. Sorry, socialist economy. Communism is an extreme form of socialism. Communism is extreme form of socialism. Communist country रे केबे भी गवर्नमेंट डिसाइड करंतनी, गोटे सिंगल पर्सन डिसाइड करे जे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। All the three fundamental economic questions are decided by a single person. For example, North Korea, तना कौन पटरे पोषण तना। Okay. Now let's come to law of demand and law of supply. Law of demand and law of supply. Now what is this law of demand and law of supply? अपन जानिते हैं law of demand and law of supply कौन? So law of demand simply states that at a higher price buyers will demand less of an economic good and vice versa. Law of demand simply states that at a higher price buyers will demand less of an economic good and vice versa. Law of demand कहूची जदि गोटे गुड रो प्राइस बहुत हाई अछि ता लोक माने से गुड को कम डिमांड करिवे, आ जदि गोटे गुड रो प्राइस कम अछि ता लोक माने से गुड को बेसी डिमांड करिवे। हला जदि प्राइस इज हाई द डिमांड इज लेस, if price is low the demand is high. This is simply law of demand या कोई law of demand कुहा जाय। एंड एटा देखो तो आपण जो डायग्राम देखि परतुवे, the demand curve is actually slopes downward from left to right. The demand curve slopes downward from left to right. Now the question is why the demand curve actually slopes downward. कौन पे slope downward sloping अच्छी demand curve? The demand curve actually slopes downward because there is an inverse relationship between price and quantity demand. जेहेतु price and quantity भितरे inverse relationship अच्छी, सेति पाई the demand curve is actually slopes downward from left to right. जो downward sloping left to right कौन देखो हमको, when price is high the demand is less, when price is less the demand is high. एटा ही देखो, this is law of demand. And what is law of supply? Law of supply simply states that at a higher prices sellers will supply more of an economic good and vice versa. Law of supply कहूची जदि गोटे गुड रो प्राइस हाई अछि ताहले प्रोड्यूसर बेसी सप्लाई करिवो, जदि गोटे गुड रो प्राइस कम अछि लो अछि ताहले गोटे प्रोड्यूसर कम सप्लाई करिवो। That means there is a direct relationship between price and quantity supply. There is a direct relationship between price and quantity supply. You can see here the supply curve actually slopes upward from left to right. The supply curve actually slopes upward from left to right. Why the supply curve slopes upward? Because there is a direct relationship between price and quantity supply. Price and quantity supply भितरे direct relationship अछि, सेति पई the supply curve slopes upward, and since there is an indirect relationship between price and quantity demand, the demand curve slopes downward from left to right. Here you need to understand another important point, that in both law of demand and law of supply, price is the independent variable whereas quantity is the dependent variable. तामाने
बुझी पारथि मु कोन कहया को चाहूची प्राइस इज द इंडिपेंडेंट बोथ लॉ ऑफ डिमांड रे भी लॉ ऑफ सप्लाई रे भी प्राइस होची इंडिपेंडेंट वेरिएबल whereas क्वांटिटी होची डिपेंडेंट वेरिएबल ता माने होची प्राइस चेंज हेले ही क्वांटिटी विल चेंज इट्स नॉट द अदर वे अराउंड क्वांटिटी चेंज हेले प्राइस चेंज होनी लॉ ऑफ डिमांड रे और लॉ ऑफ सप्लाई रे प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ता माने प्राइस चेंज हेले क्वांटिटी डिमांड चेंज होची ता माने दैट मींस quantity change in quantity depends on change in price sethipai quantity is the dependent variable whereas price is the independent variable this is very very important okay now let us understand some determinants of demand and supply determinants of demand supply एट देखंतु जेतु आज मु टिके बेसिक्स आरंभ करछि तो बेसिक्स टिके टाइम लागि पारे ओके see here law of demand and law of supply just a second okay see here mu kon कहली price change हेले quantity change होची that means quantity depends on the price ता माने कोन price गोटे ही factor प्राइस कोन गोटे ही फैक्टर जे की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करूची कोन प्राइस गोटे ही फैक्टर जे की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करूची ता माने प्राइस बढ़िले क्वांटिटी कमी जाउची ता माने इंक्रीज इन प्राइस विल लीड्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ता माने कोन एंटायर कोन केवल गोटे ही फैक्टर अछि प्राइस जोटा की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करूची माने क्वांटिटी को अफेक्ट करूची ना प्राइस छोड़ा प्राइस को छाड़ी देले apart from price there are many other factors apart from price there are many other factors which actually influence the quantity demand of a good केवल प्राइस ही गोटे गुड रो क्वांटिटी को अफेक्ट करूनी किबा इन्फ्लुएंस करूनी प्राइस को छाड़ी देले आउरी बहुत गुडा को फैक्टर अछि जो गुडा को क्वांटिटी को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करे किबा अफेक्ट करे एठी आपन को बुझिबा दरकार जदि हमको लॉ ऑफ डिमांड किंबा लॉ ऑफ सप्लाई को जदि प्रूव करिवार अछि जदि हमको लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करिवार अछि ताहले प्राइस को छाड़ देले जिते सब फैक्टर्स अछंती जो गुडा को क्वांटिटी को अफेक्ट करूचंती किंबा इन्फ्लुएंस करूचंती से सब फैक्टर्स को हमको कांस्टेंट रखिया को पड़िबो जदि आपण से फैक्टर्स गुडा को कांस्टेंट रखु नाहंती ताहले you cannot prove the relationship between price and quantity with law of demand जदि हमें देखिबा under law of demand price बढ़िले quantity कमुची price कमिले quantity बढ़ुची जदि आपण प्राइस जदि आपण लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करबा को चाहउचंती ताले प्राइस को छाड़ देले आ जति सब फैक्टर्स क्वांटिटी डिमांड को इन्फ्लुएंस करूचंती से सब फैक्टर्स को आपण को कांस्टेंट रखिया को पड़िबो नहले आपण लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करि परिबे नाही दिस इज फर्स्ट सेकंड सिमिति लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस बढ़िले लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ुची प्राइस कमिले सप्लाई कमुची प्राइस को छाड़ देले आउरी बहुत गुडा को फैक्टर्स अछि जो गुडा को क्वांटिटी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करे किबा अफेक्ट करे जदि आपण लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करबा को चाहउचंती ताहले प्राइस को छाड़ देले बाकी जे कोनसी फैक्टर अछि अन्य फैक्टर्स जो गुडा को क्वांटिटी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करूचंती किबा अफेक्ट करूचंती से सब फैक्टर्स को आपन को कांस्टेंट रखिया पड़िबो नहले आपन लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करि परिबे नाही नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दोस अदर फैक्टर्स ता माने एटे देखंतु जो डेफिनेशन लिखा आइछि लॉ ऑफ डिमांड रो द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट at higher prices buyers will demand less of an economic good and vice versa keeping other factors constant complete definition होउछि the law of demand says that at higher prices buyers will demand less of an economic good and vice versa keeping other factors constant eta hoji complete definition similarly the law of supply says that at higher prices sellers will supply more of an economic good and vice versa keeping other factors constant अन्य factors को जदि constant न रखिबे ताहले law of demand और law of supply को आपण प्रूव करि परिबे ना now let us see what are the other factors see जेहेतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट से से फैक्टर्स गुडा को भी टिके बुझवा दरकार से हम से फैक्टर्स को आगे टिके बुझवा तापर हम आसीबा टाइप्स ऑफ ओके ओके सो
बुझी पार्छन समस्ते हेलो Yes, sir. ओके समस्ते बुझी पार्छन्ती हेलो टिके हाँ कि ना कहि दियन तापर हम आगु बुझिबा Yes, sir. ओके फाइन देखा जाउची ए जो पीडीएफ देखा जाउची नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड समस्त को कैन एवरीवन सी द दिस पीडीएफ Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके नाउ सी प्राइस को छाड़ देले मु कोन कहली बहुत अन्य गुडा को फैक्टर्स अछि जे गुडा को डिमांड को क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करंती ता भीतर गोटे फैक्टर होउची इनकम जोटा कि कोन कहै छै हम एटी कहू नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड होला तो गोटे फैक्टर होउची प्राइस आउ अन्य फैक्टर को हमें कहि केवल कहू नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड से नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स भीतर गोटे फैक्टर होउची कोन इनकम देखंतु मु जहा कहली आपन को जदि आपन इनकम को कांस्टेंट न रखिबे ताले आपन लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करि परिबे नाही काहे कि ना देखंतु एठी ध्यान से देखंतु देखो डायग्राम देखंतु डायग्राम सी द डायग्राम हियर हाँ एठी देखंतु in general demand increases as consumers income increase and demand falls when consumers incomes decrease ता माने जदि गोटे लोकर इनकम ता इंक्रीज करूची ताहले गोटे गुड रो डिमांड बढ़ी जाउची जदि गोटे लोकर जदि इनकम फॉल करूची ताहले डिमांड कमी जाउची ओके जदि आमे इनकम को कांस्टेंट न रखिबा ताहले कोन होउची देखंतु कोन होउची सपोज प्राइस ऑफ एप्पल्स थिला 100 पर केजी प्राइस ऑफ एप्पल्स अछि 100 रुपीस पर केजी जेतबे प्राइस ऑफ एप्पल्स थिला 100 रुपीस पर केजी से केते डिमांड करतुला 1 केजी ऑफ एप्पल्स डिमांड करतु जेतबे प्राइस थिला 100 रुपीस पर केजी से केते केजी एप्पल्स डिमांड करतुला 1 केजी ऑफ एप्पल्स डिमांड करतु ओके 1 केजी ऑफ एप्पल्स डिमांड करतु सपोज तार इनकम वर्तमान इंक्रीज करि जाइछि तार इनकम वर्तमान इंक्रीज करि गला तापर सपोज तार इनकम थिला 1000 रुपीस वर्तमान हे गेला 2000 रुपीस तो एटी कोन लिखा हिची इनकम इंक्रीज करले डिमांड इंक्रीज करी देखंतु एटी कोन हिची जेहेतु इनकम इंक्रीज करि गला फ्रॉम 1000 टू 2000 रुपीस सेति पई एप्पल रो प्राइस केते अछि 100 रुपीस पर केजी सेति पई से 8 given the price of apples at 100 rupees per kg now the person is demanding 2 kg of apples 2 kg of apples law of demand कोन कहउची प्राइस कमिले गोटे लोक बेसी डिमांड करिवो किंतु एठी प्राइस कमिनी प्राइस 100 थिला एबे भी 100 अछि किंतु से वर्तमान केते केजी डिमांड करूची 2 केजी ऑफ एप्पल्स डिमांड करूची कोन पई काहे कि ना ता इनकम इंक्रीज करि जाइछि since the person's income has increased given the price of apples the person is now demanding more compared to earlier एटा बुझी पारले पॉइंट ना बुझी पारले नाही जदि आमे इनकम को कांस्टेंट न रखिबा ताले कोन होउची एटी आपण लॉ ऑफ डिमांड को प्रूफ करि परिबे नाही जानि पड़छ ना जानि पड़ नांती ए पॉइंट आपण समस्त जानि पारले जानि पर मते टिके कोहंतु हां कि ना कोहंतु प्लीज ए पॉइंट को बुझी पारले ना समस्त कोहंतु टिके हां कि ना बुझिला सर ओके ओके माउथरे कहूची लॉ ऑफ डिमांड कहूची प्राइस फॉल करले ही गोटे लोक बेसी किनिबो एठी किंतु प्राइस फॉल करी नाही प्राइस थिला 100 एबे भी अछि 100 किंतु से वर्तमान 2 केजी ऑफ एप्पल्स किनुची कोन पई काहे कि ना ता इनकम इंक्रीज करी जाईची सेति पई जदि आपण इनकम को कांस्टेंट न रखिबे ताले आपण लॉ ऑफ डिमांड को प्रूफ करी परिबे नाही सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर income is such a factor which can affect or influence quantity demand so in order to prove law of demand you have to keep income as a factor income as a non price factor constant आपण income को constant रखिले ही law of demand को prove करि परिबे एठी देखंतु कोन होउची see here right hand side diagram एठी देखंतु जेतोले रुपीस थिला 100 रुपीस थिला पर केजी ऑफ एप्पल्स से केते डिमांड करथुला 1 केजी ऑफ एप्पल्स डिमांड करूची लॉ ऑफ डिमांड कौन कहूची लॉ ऑफ डिमांड कहूची प्राइस बढ़िले ही जदि प्राइस इंक्रीज करे ताहले ही गोटे लोक कम किनिबो किंतु एठी प्राइस इंक्रीज करिनी
प्राइस जेतिकी थिला सेतिकी ही अछि किंतु गोटे वर्तमान गोटे लोक केते किनुची 0.5 kg of apples किनुची आगुर केते किनुतला 1 kg of apples but price remaining constant now the person is purchasing or demanding 0.5 kg of apples why because his income has fallen his income has decreased जेतु income decrease करि जाईची सेति पई प्राइस कांस्टेंट थाई कि भी से वर्तमान 0.5 kg of apples किनुची किंतु आगुर केते किनुतला 1 kg of apples this is the reason why you need to keep income constant to prove law of demand. This is first factor. Second factor is your price of related commodities. Second factor is price of related goods. See, there are three types of related goods. One is your substitute goods, one is your complementary goods, and one is your unrelated to each other. Now, what do you mean by substitute goods? प्रथमे जानन्तु substitute goods are those goods which substitute each other, or you can say which replace each other so far as consumption is concerned. I repeat, substitute goods are those goods which substitute each other. For example, tea and coffee. जदि tea नहीं ताल tea रो substitute पी दियंतु coffee पी दियंतु tea लोक माने कोन पे पियंती मु तो जानि tea कोन पे पियंती किंतु जति सुनिछि लोक मान कोन मुंडो बता भलो होइछ जार मुंडो बिंतु तार मुंडो बता भलो होइछ जार जाको माइंड रिफ्रेश करिवार थिवो ता माइंड भी रिफ्रेश हो जाए तो टी आपन को जहाँ भी आपन को माने कोन आपन को माइंड को रिफ्रेश करिवार सहायता करूछि किबा आपन को हेडेक को कोन दूर करूछि तो जहाँ भी टी रो जहाँ भी इफेक्ट अछि पाखापाखि सेम इफेक्ट कॉफी भी दिए सो ततबे जदि टी नाही ताले कॉफी कंज्यूम करंतु सो टी एंड कॉफी आर substitutes tea and coffee are substitutes for example similarly android and smartphones apple phones there are also two different softwares the android phone to substitute kon android ios okay ios जदि एंड्रॉइड नहीं ताले एप्पल किनंतु जदि एप्पल नहीं ताले एंड्रॉइड किनंतु okay so these are substitute goods are those goods which substitute each other अच्छा मते कहि परि आपन भितर किए कोका कोला एंड पेप्सी किंबा थम्स अप एंड पेप्सी आर दे substitute goods कोका कोला No, sir. पेप्सी are they substitute goods No, sir. why not कोका कोला हे गला थम्स अप हे गला पेप्सी हे गला मिरांडा हे गला फैंटा हे गला ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स ना नहे काई लोक मन तो मु तो देखि छी दुकान रे लोक माने जदि थम्स अप नाही ताले पेप्सी पी दियंती पेप्सी जदि नाही ताले कोन कोका कोला पी दियंती सो व्हाई दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स से बहुत बही रे लिखा हिची जे कोन पेप्सी कोका कोला थम्स अप ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स बट रिमेंबर द पॉइंट मन रखि थांतु they are not perfect substitutes सेगुडा को हमें perfect substitutes कोई परिवानी because they are not different goods they are same goods से दीटा जाको same good all the goods Pepsi हो Coca Cola हो Thumbs Up हो all those are carbonated drinks with different flavors केवल flavor ही different किंतु all they are carbonated drinks they are not different goods here tea and coffee they are different goods here Nike and Adidas they are not different goods किंतु मु Nike and Adidas एग्जांपल एथि पई देछि काई कहूछि मु काई देछि एग्जांपल वर्तमान पे एथि कि बुझंतु they are not different goods they are same goods since they are same goods they are not perfect substitutes even though we can call them as substitutes हमें तमको substitute कहि परिबा हमें तंको किंतु क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कहि परिबा नाही व्हाई बिकॉज़ दे आर नॉट डिफरेंट गुड्स दे आर सेम गुड्स हमें सब्स्टिट्यूट को आउथरे कहूची हमें तंको सब्स्टिट्यूट्स कहि परिबा किंतु हमें तंको परफेक्ट किंबा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स कहि परिबा नाही टी एंड कॉफी दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नाइकी एंड आदिदास दे आर सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बिकॉज़ दे आर नॉट डिफरेंट गुड्स दे आर सेम गुड्स त माने कोन नाइकी भी गोटे जूता कंपनी रो ब्रांड आदिदास भी गोटे शू रो ब्रांड Nike भी गोटे शू रो ब्रांड Adidas भी शू रो ब्रांड they are same goods जेमि सेमिति आ एग्जांपल आपण कोन मैसूर सैंडल सोप रो सब्स्टिट्यूट देई परिबेनी कोन कहलो माने हमर पियर साबुन हेई परिबोनी ता सब्स्टिट्यूट they are substitutes but they are not close substitutes सोप रो सब्स्टिट्यूट हबो कोन जो हमरा आसे कोन तर लिक्विड सोप जो आसे नि कोन सेटा बॉडी वॉश they are substitute because they are two different goods जदि सोप नाही ताले बॉडी वॉश यूज करंतु जदि बॉडी वॉश नाही ताले सोप यूज करंतु बुझि पारले
जदि दीटा जाक नहीं ताले केवल पानी यूज करो बुझबन दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एति की बुझी परछन बोली मैं आशा करूची सब व्हाट यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स ओके दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स नाउ सी कौन हुए सब्स्टिट्यूट गुड्स केस look at the left hand side diagram look at the left hand side diagram price of coffee has decreased what will happen to the quantity demand for coffee देखी कौन सब्स्टिट्यूट गुड्स एठी एग्जांपल दिया आइची लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम को देखंतु दीटा का प्राइस कॉफी एंड टी एंड कॉफी बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स जदि कॉफी रो प्राइस जदि फॉल करि जाय कॉफी रो प्राइस जदि फॉल करि जाय ताले what will happen to the demand for tea if price of coffee falls what will happen to the demand for tea टी रो डिमांड कौन होबो जदि प्राइस रो कॉफी फॉल कर जाता है कौन हो डायग्राम कमी जीव मु आउथर क्वेश्चन पचरची जदि कॉफी रो प्राइस जदि फॉल करि जाय what will happen to the demand for tea समस्त पचरची आउथर कौन होबो टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स समस्त बुझी पारथुवे जदि कॉफी रो प्राइस फॉल कर जाए व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर टी अरे टी रो डिमांड फॉल कर जीवो टी रो डिमांड फॉल करि जाउची कॉफी रो प्राइस एटी फॉल करि गला माने टी रो डिमांड फॉल करिवो काहे कि ना सब लोक वर्तमान कॉफी आड़ को दौड़िबे कॉफी कंज्यूम करबा को चाहिए काहे ना कॉफी टा मार्केट सस्ता हो जाइची अब कॉफी एंड टी बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स coffee and tea are both are substitute goods so when price of coffee decrease the demand for tea actually decrease because the people will prefer to consume more and more coffee instead of tea तो एटी कौन होची देखंतु लॉ ऑफ डिमांड कौन कहूची लॉ ऑफ डिमांड कहूची प्राइस इंक्रीज कले ही टी रो डिमांड फॉल करिवा दरकार किंतु एटी टी रो डिमांड काहे की फॉल करची द डिमांड फॉर टी हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम Q1 to Q2 but price remaining constant price of tea remaining constant why the quantity demand for tea has decreased because the price of its substitute good has decreased जदि आमे substitute goods रो प्राइस को जदि constant न रखिबा ताहले आमे law of demand को प्रूफ करि परिबा नाही so again you have to keep the price of substitute goods as constant in order to prove the law of demand I hope समस्त बुझि परछन okay जदि सेटा ही जदि कॉफी रो प्राइस जदि इंक्रीज कर जाई थांदा जदि कॉफी रो प्राइस इंक्रीज करथांदा ताले टी रो डिमांड कोन ही थांदा जदि कॉफी रो प्राइस इंक्रीज करथांदा टी रो डिमांड कोन ही थांदा इंक्रीज करथांदा प्राइस ऑफ टी रिमेनिंग कांस्टेंट काइना वर्तमान सब लोग क्वाड को कंज्यूम करे प्रेफर करिए बिकॉज़ टी नाउ द पीपल विल प्रेफर टू कंज्यूम मोर ऑफ टी बिकॉज़ द प्राइस ऑफ कॉफी हैज इंक्रीज्ड एंड टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स हेलो एति बुझी परछन समस्त भाबुची मु okay now let's come to complementary goods what are complementary goods are those goods which complement each other that means those goods which are used together those goods which go hand in hand ता माने the complementary goods को अपन कोन ओडिया रे मु कहि पानी माने they are used together you cannot use one good without the other you cannot use one good without the other if you want to use you have to use both the goods together दीटा को मिसे ही यूज करिया को पड़िबो आपण अलग अलग यूज करि परिबे नाही दोस आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स आपण जदि कार चलोछन तले आपन को पेट्रोल दरकार जदि पेन लेखुछन देन यू नीड अ रिफिल टूथब्रश एंड टूथपेस्ट ओके दीज आर एटा जो टूथब्रश एंड टूथपेस्ट लिखाई छी एटा ଗୋଟେ सस्ता एग्जांपल बुझ पाले तो इवन लोक हाथ रे भी घस दियो हाथ रे भी कोन माने ब्रश कर दियो सो एटा लिखिस तथा भी बुझ परछन it's a सस्ता example but a good example not a bad example so complementary goods are those goods which are used together they go hand in hand now see here what is this one price of car when price of car is decreased when price of car decreases what will happen to the demand for its complementary good when price of car decreases what happens to the demand for its complementary good answer diyantu please answer diyantu please give answer
जदि कार रो प्राइस फॉल करी जाए ताले पेट्रोल रो प्राइस पेट्रोल रो डिमांड कोन हो व्हाट विल High. हैपन टू द Fall. कार रो जदि प्राइस फॉल करी जाए ताले पेट्रोल रो डिमांड कोन हो हाउ थरे पचार In- देखो डायग्राम देखो प्लीज सी द डायग्राम प्लीज सी द डायग्राम एट देखो लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम देखो कार रो प्राइस फॉल करी जाइछि कार रो प्राइस फॉल करी जाइछि किंतु पेट्रोल डिमांड कोन हिछि पेट्रोल डिमांड इंक्रीज करी जाइछि काहेकि ना कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स ता माने कार रो प्राइस फॉल करिवा जगु कार रो डिमांड बढ़ी जाइछि फ्रॉम Q1 टू Q2 जेहेतु कार रो डिमांड बढ़िछि सेति पई पेट्रोल रो डिमांड भी बढ़ी जाइछि प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट price remaining P1 the demand for petrol has increased from Q1 to Q2 why because the price of car has decreased and since the price of car has decreased the quantity demand for car has increased जदि लोक माने बेसी कार किनुछन ताल बेसी पेट्रोल भी दरकार पड़िबो ना बुझि परछन ना बुझि पानंदी तो पेट्रोल रो प्राइस कांस्टेंट थाई कि पेट्रोल डिमांड बढ़ी गला सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कोन होउची सब्स्टिट्यूट गुड्स केस रे जदि गोटे गुड रो प्राइस फॉल करूची ता सब्स्टिट्यूट गुड रो डिमांड कोन होबो फॉल करिवो जदि गोटे गुड रो प्राइस फॉल करूची ता सब्स्टिट्यूट गुड रो डिमांड कोन करूची फॉल करूची किंतु कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स केस रे कोन होउची जदि गोटे गुड रो प्राइस फॉल करूची ता कॉम्प्लीमेंटरी गुड रो डिमांड कोन होबो इंक्रीज करिवो यू नीड टू अंडरस्टैंड जदि बुझी पारछन ना बुझी पाउनहंती यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ओके these are एसो कोन एटा एगुडा को माने बहुत फंडामेंटल जिंस गुडा जोटा कि आपण माने बुझिबा दरकार एटा देखंतु पेट्रोल रो प्राइस कांस्टेंट थाई कि तार डिमांड बढ़ी जाईची किंतु लॉ ऑफ डिमांड कोन कहूची लॉ ऑफ डिमांड कहूची प्राइस फॉल करले ही डिमांड बढ़िबा कथा किंतु एटा प्राइस फॉल करनी प्राइस P1 थिला P1 ही अछि किंतु डिमांड बढ़ी जाईची कोन पई काई ना कार प्राइस फॉल करी जाईची ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड माने समस्त बुझी पारले मासे कहूची now let's come to unrelated goods now the third type of goods are unrelated goods तो unrelated goods এটা ঠিক আছে আপনি দেখে দেবে এটা if goods are unrelated a change in price of one has no effect on the demand for other so it has now let's come to this future price expectation this is another factor हम वर्तमान दुटा फैक्टर देखले गोटे देखले इनकम आ गोटे देखले related goods okay दुटा फैक्टर कांस्टेंट रखिया पड़िबो if you want to prove law of demand okay now the third factor is future price expectations future price expectation देखंतु जदि लोक माने expect करूचंती if people expect the prices of goods and services to increase in future if people expect the prices of goods and services to increase in future then what will happen to the demand for goods and services at present जदि लोक माने expect करूचंती जे फ्यूचर रे गुड्स एंड सर्विसेज जिंस गुडाकर दरदाम बढ़िबो so what will happen to the demand for goods and services at present रे demand कोन होबो Increase. demand will increase at present why because people are expecting the prices to increase in future जेहेतु सेमाने expect कोचन future रे price increase करिवो सेति पय सेमाने वर्तमान स्टॉक करिवा आरंभ करिवे बुझ परछंती स्टॉक करिवा आरंभ करिवे एबे आलू पियाज रे दाम बढ़ी जिवो लोक मन जानिया को पाइबे त से कोन करिवे 2 बस्ता 3 बस्ता आनी घर रखि देबे बुझ परछन ना हला आलू पियाज बस्ता आनी घर रखि देबे काई ना आगु प्राइस बढ़िया जाउछ सो प्राइस हियर रिमेनिंग कांस्टेंट the demand has increased from Q to Q1 price remaining constant the demand has increased from Q to Q1 because people are expecting the prices to increase in future बुझी परछंती तो जदि आपण लॉ ऑफ डिमांड को जदि प्रूव करिवार अछि you have to keep this future price expectations constant okay now जदि लोक माने एक्सपेक्ट करछंती फ्यूचर रे प्राइस कमिबो so what will happen to the demand for goods and services at present what will happen to the demand for goods and services at present कोन हो प्राइस जदि लोक माने एक्सपेक्ट करछंती फ्यूचर रे प्राइस कमिबो जिंस गुडाकर प्राइस कमिबो ताले प्रेजेंट रे डिमांड कोन हो गुड्स एंड सर्विसेज रो डिमांड कमी जिवो डिमांड कमी जे लोक माने कहबे कोन लोक माने कहबे वर्तमान कम किनिथिबा आगु जति प्राइस कमी जिवो हम बेसी डिमांड करिया बेसी किनिया बुझि परछंती तो डिमांड विल डिक्रीज if people expect the prices to fall in future then at present the demand for goods and services will fall price remaining constant बुझि परछन एटा देखंतु प्राइस कांस्टेंट अछि किंतु डिमांड फॉल करि जाइछि फ्रॉम Q to Q2 why
because people are expecting the prices of goods and services to fall in future. एटा मु होप करूची आपण समस्त बुझी पारछन्ते ना. ओके, बट दिस इज डिफिकल्ट तो नाही एगुडा को आपण बुझी पारछे मु आशा करूची. And these are some other factors. These are taste and preferences. If the taste and preferences change hela ताहले कोन हो, price remaining constant, the demand for that particular good or service will increase. लोक मान जदी वर्तमान बेसी रो बेसी पिज्जा खाइबा को प्रेफर करले, पिज्जा खाइबा को जदी प्रेफर करछन्ती ताहले कोन हो, पिज्जा रो प्राइस कांस्टेंट थाई कि भी तार डिमांड ता बढ़ी छी. बुझ पाले काई ना, because the taste and preferences of people has shifted towards pizza. Similarly जदी पिज्जा प्रति जदी डिमांड पिज्जा प्रति लोकन को टेस्ट और प्रेफरेंस कमी जाए ताहले प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, the demand for pizza will reduce. Okay, this is another factor. Now number of consumers. If जदी गोटे देशर पॉपुलेशन बढ़ुची ताहले गोटे गुड रो प्राइस कांस्टेंट थाई कि भी तार डिमांड बढ़िबो. Why? Because number of consumers are increasing and vice versa. जदी number of consumers decrease करि जाउचंती ताहले गोटे गुड रो प्राइस कांस्टेंट थाई कि भी तार डिमांड कमी जिवो. This is another factor. Okay, so these are factors, and these are some other factors. Factors like change in seasons, natural disasters, scientific research findings can also lead to a shift in a demand curve either to right or left. एगुडा को मु बुझौनी, आपण माने जेहेतु कांसेप्ट बुझी गले एगुडा को आपण माने निजे निजे बुझी पारिबे by using your intelligence. Okay, the other factors ताल बुझी पारले. So non price determinants of demand, there are many factors like income, like a related good, price of related goods, for example future price expectations, for example taste and preferences, number of consumers, change of seasons, natural disasters. All these are non price determinants of demand. Now let's come to determinants of supply. Determinants of supply, मु ऑलरेडी कहिछि जदी आपण लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूफ करबा को चाहउचंती, then you have to keep the factors apart from price which may influence the quantity supply as constant. जदी आपण लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूफ करबा को चाहउचंती ताले प्राइस को छाड़ देले जेते गुडा को फैक्टर्स अछि जोटा कि क्वांटिटी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करि परिबो, से सब फैक्टर्स को आपण को कांस्टेंट रखिया को पड़िबो, जेमिति आमे डिमांड केस रे देखिले. See here, the first factor, the first non-price determinant of supply is cost of factors of production. जदि cost of production जदि increase करी जाए, if cost of production जदि increase करी जाए, then what will happen to the quantity supply? The quantity supply will decrease from Q1 to Q2, price remaining constant. किंतु law of supply कौन कहउतला? Law of supply कहउतला supply केतले कमिया दरकार, जेतबेले price कमिबो सेतबेले supply कमिया दरकार, किंतु एटी price constant अछि किंतु supply कमी जाउची from Q1 to Q2. काहेकि? Because the cost of production has increased. बुझी परछन समझते? Cost of production has increased. This is first factor which you need to keep constant. The second is the price of related goods. जेमिति हमें सेठी देखिथिले कोन substitute goods, complementary goods, सेमिति एठी भी अछि हमें देखिबा substitute goods and complementary goods. किंतु law of supply side रो जदि हमें देखिबा, supply side रो जदि हमें देखिबा, substitute goods को कोन कुआ जाय? कौन कुआ जाए कॉम्पिटिटिव गुड्स. डिमांड साइड रो जदि देखिबा ताले सब्स्टिट्यूट गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स ही कुआ जाए. जदि हमें सप्लाई साइड रो देखिबा ताले सब्स्टिट्यूट गुड्स को कुआ जाए कॉम्पिटिटिव गुड्स. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी फ्रॉम डिमांड साइड दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, whereas tea and coffee from supply side they are called as competitive goods. Now what happens is, see कौन हुए देखो प्लीज हियर ये जोड़ा को लिखा है सेटा आपण नीचे पढिबे, मैं आपन ए डायग्राम थ्रू बुझाउ छी. प्लीज हियर जदि प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज करि जाए, प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज देखो वर्तमान आपण सप्लाई साइड रो देखिबे, डिमांड साइड रो नहै. माउथरे माने आपण मानन को कहू छी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड these factors from supply side, not from demand side. Okay, तो देखि मत उत्तर दियंतु. देखो तो टी एंड कॉफी they are competitive goods now. They are substitute goods, but from supply side they are competitive goods. Now when price of coffee increases from P1 to P2, जदि कॉफी रो प्राइस इंक्रीज करूची from P1 to P2, what will happen to the quantity supply of tea? What will happen to the quantity supply of tea? मो एटी क्वांटिटी डिमांड पचरनी, मु पचरची क्वांटिटी सप्लाई ऑफ टी. If price of coffee increases from P1 to P2, जदि मार्केट रे कॉफी रो प्राइस जदि बढ़ी जाए ताहले what will happen to the supply of tea? What will happen to the supply of tea? टी रो सप्लाई मार्केट रे कोन हो, बढ़िबो ना कमिबो? Body jibo increase. आउ थरे कहूची सुनंतु. जदि कॉफी रो प्राइस जदि मार्केट रे बढ़ी गला ताहले
टी रो सप्लाई कौन हम मार्केट रे आपण समस्ते निजकू टी प्रोड्यूसर बोली भावंतु आपण माने समस्ते निजकू टी प्रोड्यूसर बोली भावंतु आपण माने टी प्रोड्यूस करूचंती आ आपण देखिले मार्केट रे कॉफी रो प्राइस बढ़ी गला ताले वर्तमान कॉफी रो प्राइस बढ़िबा जोगु as a tea producer will you supply more of tea or will you supply less of tea कहना टी रो प्राइस बढ़ी मार्केट रे प्राइस बढ़ी कॉफी रो ताले आपण माने वर्तमान as a tea producer टी रो सप्लाई बढ़ेबे ना कमेबे प्लीज सी द डायग्राम Amazing, sir. both diagrams are interlinked जदि कॉफी रो प्राइस जदि बढ़ी जाउची then what is happening to the quantity supply of tea is कमे देबे why the quantity supply of tea will decrease yes कमिबो quantity tea रो supply actually कमिबो say tea the supply of tea will decrease but the question is what कार माइक ऑन ଅଛି okay please mute कर दो fine देखो जब प्राइस जब कॉफी रो प्राइस बढ़ी जाए then the quantity supply of tea will decrease why काहे कि ना लॉ ऑफ सप्लाई कौन कहूची लॉ ऑफ सप्लाई कहूची प्राइस बढ़िले क्वांटिटी सप्लाई बढ़िबो ताले प्रोड्यूसर माने सप्लाई कौन पे बढ़ांती प्राइस बढ़िले काहे ना से माने एक्सपेक्ट करूचंती बेसी रो बेसी प्रॉफिट अर्न करि परि जदि सपोज आपण टी प्रोड्यूस करूचंती मार्केट रे आपण टी प्रोड्यूसर आपण देखिले टी रो प्राइस ता बढ़ी जाउची मार्केट रे बढ़ी चलची तले आपण कोन करिवे आपण टी रो सप्लाई बढ़े देबे काहे ना आपण बेसी रो बेसी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूचंती बुझ पारले सेति सप्लाई बढ़े प्राइस बढ़िले सप्लाई एथि बढ़े काहे ना प्रोड्यूसर्स माने बेसी रो बेसी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूचंती सेति सप्लाई ता कोन प्राइस बढ़िले सप्लाई बढ़े तो एठी कोन होउची देखंतु जदि प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज करूची तले सप्लाई टी रो सप्लाई कमी जीवो कोन पई काहे ना जो प्रोड्यूसर्स माने वर्तमान टी प्रोड्यूस करूचंती से माने वर्तमान समस्ते टी को छाड़ी की कौन प्रोड्यूस करिवा आरंभ करिवे कॉफी प्रोड्यूस करिवा आरंभ करिवे they will now shift towards producing more of coffee because the price of coffee in the market has increased which could help them earn more profits सेति पई टी रो सप्लाई मार्केट रे कमी जीवो why सेति पई तो एदिटा कोन सप्लाई साइड रो जो देखिबा एदिटा जाको होची कोन कॉम्पिटिटिव गुड्स बोथ आर कॉम्पिटिटिव गुड्स बुझि परले जदि गोटे गुड रो प्राइस बढ़ुची ताले ता कॉम्पिटिटिव गुड रो प्राइस कोन होइजिवो कमी जी सर सप्लाई कोन हो कमी आपण माने बुझी परले ना बुझी परलेनी म आउथरे कहूची प्राइस ऑफ कॉफी मार्केट रे इंक्रीज करि जाईची आपण समस्ते टी प्रोड्यूस करूचंती किंतु आपण देखिले जे जेतु प्राइस ऑफ कॉफी मार्केट रे बढ़ी जाईची ताले वर्तमान आपण बेसी रो बेसी प्रॉफिट अर्न करि परिबे जदि आपण कॉफी प्रोड्यूस करिवे ना कि टी सेति पई आपण कोन करिवे आपण टी को छाड़ देके वर्तमान कॉफी प्रोड्यूस करिवा आरंभ करिवे सेति पई कॉफी रो सप्लाई मार्केट रे बढ़ी जीवो आ टी रो सप्लाई मार्केट रे कमी जीवो एते की बुझी परले ना बुझी परले समस्त बुझी परले नी yes sir प्लीज मते टिके हां के ना कहि दियंतु सेति की मते कहउतांत हां के ना कहउतांत Yes, sir. ओके फाइन देखो तो एटी लॉ ऑफ सप्लाई कौन कहूची लॉ ऑफ सप्लाई कहूची प्राइस कमिले ही सप्लाई कमिया दरकार किंतु एटी टी रो प्राइस कांस्टेंट अछि टी रो प्राइस कमिनी किंतु तथापि क्वांटिटी सप्लाई कमी जाउची कोन पई काहे कि ना प्राइस ऑफ कॉफी हैज इंक्रीज्ड सेति पई कोन करो जदि आपण लॉ ऑफ सप्लाई को जदि आपण माने प्रूफ करिया चाहउचंती देन यू हैव टू कीप द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड्स कांस्टेंट नाउ देखो तो एटी कोन देखो तो कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स डिमांड साइड रो देखले तांको कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कुआ जाय फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल को डिमांड साइड रे देखले तांको कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कुआ जाय किंतु कार एंड पेट्रोल को जदि आपण सप्लाई साइड रो देखिबे किबा प्रोड्यूसर साइड रो देखिबे तांको कोन कुआ जाय जॉइंट गुड्स कुआ जाय जॉइंट गुड्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ई जिंस सब बुझे चेष्टा करंतो ओके नाउ प्लीज सी द डायग्राम हियर जदि नाउ आपण बुझी परले दीज आर जॉइंट गुड्स ओके सी हियर जदि पेट्रोल रो प्राइस जदि बढ़ी जाउची what will happen to the quantity supply of diesel अच्छा देखो जॉइंट गुड्स को आगे बुझे दी जॉइंट गुड्स गुडा कोन जॉइंट गुड्स कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स सॉरी मु आपन गोटे एटी भूल कहतली कार एंड पेट्रोल आर नॉट जॉइंट गुड्स दे आर फ्रॉम डिमांड साइड कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स बट फ्रॉम सप्लाई साइड कार एंड पेट्रोल they are not joint goods okay
joint goods कौन है? Some goods which are produced together. Complementary goods कौन थिला? Complementary goods are those goods which are used together. Complementary goods are those goods which are used together, whereas joint goods are those goods which are jointly produced. Which are jointly produced. तामाने एबे suppose आपण crude oil को जदि आपण रिफाइन करिवे ताले क्रूड ऑयल आपण कोन आपण प्रोड्यूस करि परिबे? आपण पेट्रोल भी प्रोड्यूस करि परिबे, आपण डीजल क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल भी प्रोड्यूस करा जाए, पेट्रोल प्रोड्यूस करा जाए, केरोसिन प्रोड्यूस करा जाए, नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करा जाए, बुझ पारले? सो ऑल दीज आर जॉइंट गुड्स बिकॉज़ दे आर जॉइंटली प्रोड्यूस्ड. दे आर जॉइंटली आपको सेते में कुआ जाए कोन जॉइंट गुड्स. दे आर जॉइंटली प्रोड्यूस्ड. एते कि बुझी पारले समझते? जो गुड्स गुडा को हमें जॉइंटली प्रोड्यूस करू ताको कुआ जाए कोन जॉइंट गुड्स. ओके, सी हियर देखो डायग्राम देखो. जदि पेट्रोल रो जदि प्राइस बढ़ी जाए, व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई ऑफ डीजल? व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई ऑफ डीजल? कौन होची बढ़ुची ना कमुची सप्लाई डीजल रो सप्लाई? एक्चुअली मार्केट रे पेट्रोल रो प्राइस बढ़ी जाईची. ताहले मु आपन पचारुची डीजल रो सप्लाई कोन हो? बोथ आर जॉइंट गुड्स. बोथ आर जॉइंट गुड्स. मार्केट रे पेट्रोल रो प्राइस बढ़ी जाईची. मो क्वेश्चन होची what will happen to the supply of diesel? Keep in mind both are joint goods. Both are joint goods. Please answer. Please answer. Increase. Increase Increase. करियो. Now why increase? Why increase? मते एटा बुझांतु. Why increase? काहे कि increase करियो? काहे कि increase करियो? बुझी पाउछ ना बुझी पाउन? Both are joint goods. अरे जदी देखंतु ध्यान से सुनंतु. जदि मार्केट रे जदि पेट्रोल रो प्राइस बढ़ी जाए ताले पेट्रोल प्रोड्यूसर्स पेट्रोल को बेसी सप्लाई करने की चेष्टा करियो ना कम सप्लाई करने की चेष्टा करियो? Basic. पेट्रोल रो जदि प्राइस बढ़ी जाए ताले प्रोड्यूसर्स माने बेसी रो बेसी पेट्रोल सप्लाई करिवे. पेट्रोल को केमिति प्रोड्यूस करा जाए? पेट्रोल को केमिति प्रोड्यूस करा जाए? बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल. पेट्रोल को प्रोड्यूस करा जाए बाय रिफाइनिंग क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल को रिफाइन कला माने केवल पेट्रोल ही बाहर नहीं. रिफाइन को क्रूड ऑयल को रिफाइन कला माने पेट्रोल सहित डीजल भी बाहर. ता माने पेट्रोल रो जदि सप्लाई बढ़ुची ताले डीजल रे भी सप्लाई कोन हो? इंक्रीज करिवो बिकॉज़ बोथ आर जॉइंट गुड्स. बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं? मार्केट रे पेट्रोल रो प्राइस बढ़ी जाईची. सो एज अ प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोल मु बेसी रो बेसी पेट्रोल सप्लाई करबा को चेष्टा करिवि. किंतु पेट्रोल को प्रोड्यूस करिया पहले मते कोन करिया पड़िवो? क्रूड ऑयल को रिफाइन करबा को पड़िवो. किंतु क्रूड ऑयल को रिफाइन कला माने केवल पेट्रोल ही बाहर नहीं, पेट्रोल सहित डीजल भी बाहर, केरोसिन भी बाहर, नेचुरल गैस भी बाहर और केते गुडा प्रोडक्ट्स बाहर. ताले पेट्रोल सहित सब गुड्स रो सप्लाई बढ़ी जिवो. व्हाई? बिकॉज़ ऑल दोस गुड्स आर जॉइंट गुड्स. जॉइंट गुड्स मीनिंग दोस गुड्स आर जॉइंटली प्रोड्यूस्ड. बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं समझते? एटलीस्ट हां कि ना कोन प्लीज प्लीज बुझी पारले समझते? ओके ओके फाइन फाइन. से देखो तो एटी प्राइस कांस्टेंट अछि. प्राइस कांस्टेंट अछि. लॉ ऑफ सप्लाई कहूची प्राइस बढ़िले ही सप्लाई बढ़िबा दरकार. किंतु एटी प्राइस कांस्टेंट अछि, सप्लाई बढ़ी जाईची कोन पई? बिकॉज़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड. And since the price of petrol has increased, the producers will try to produce more of petrol, but along with the production of petrol, the supply of diesel will also increase because petrol and diesel both are joint goods. Okay? बुझी पारले समझते? Okay. जोटी आपण मान को लागिवो जे कोन कहले जोट लागिवो आपण माने बेहोश हे जाउछंती. बुझी पारले? आ हबोनी संभाली परिबेनी मते कहि देबे. बुझी पारले? सेठी आपण बंद कर दो. फाइन. ओके, तने बहुत जल्दी टेक्निकल हे जिवो. Fine. Okay. Now see government intervention. Okay. Government intervention. मुझे recently गोटे इंस्टीट्यूट रे क्लास नउथली तो एमिति टेक्निकल बहुत टेक्निकल हे गेला कांसेप्ट गुडा को. तो गोटे स्टूडेंट कोन ला गोटे स्टूडेंट आखी खोली के मते अनै बुझ परछन ना. तो ताके लागिला जेमिति ताको कोन केले आउ माने 2-3 मिनिट पर ता कोमा हे जिवो. हां, that was the reaction. ये तो बेसिक टेक्निकल हे गेला मन इकोनॉमिक्स. You see here. Now see government intervention. Government intervention, indirect taxes. See, indirect taxes increase the cost of production. जदि गवर्नमेंट कौन करिवो जदि जीएसटी बढ़ाई दिए
GST बढ़ला माने what will happen to the cost of production? Cost of production कौन ही What will happen to the cost of production? The cost of production will increase or decrease. Increase. The cost of production will increase. If government increases indirect taxes, then the cost of production will increase. When cost of production increases, what will happen to the quantity supply? Decrease. Cost of production जदि increase हो जाए तो quantity supply कौन हुए? Decrease हो जाए. हमें first point ही देखी थी ना? हमें first point कौन देखी थी ठीक? Law of supply under first point कौन देखी थी? When cost of production increase, what will happen? What will happen to quantity supply? Quantity supply will decrease, price remaining constant. Okay. ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଥର ହଁ କି ନା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. ଓକେ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? Yes, sir. Fine. Okay, fine. So indirect taxes, when government increases indirect taxes, what will happen to the quantity supply? Quantity supply will decrease, the price remaining constant. This is another factor which must be kept constant to prove law of supply. Now subsidies. When government provides subsidies, that the government subsidies provide करे, what will happen to the cost of production? The cost of production will जदि government fertilizer companies मानकु जदि cost fertilizer companies मानकु subsidy provide करूची ताले fertilizer company मानकर cost of production कौन होगा? Decrease करियो ना increase करियो? हाँ कौन करियो? Decrease. जदि subsidy government subsidies provide करूची fertilizer companies मानकु ताले fertilizer companies मानकर cost of production कौन होगा? Decrease करियो ना increase करियो? The cost of production will decrease. When cost of production will decrease, what will happen to the supply? Supply will increase. Why? Because the profit margin will increase. The price remaining constant. देखो तो price constant अच्छी. Price constant था कि quantity supply बढ़ी जाइए from Q1 to Q2. Why? Because the government has provided subsidies to the producers. ऐसे कि बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं. ସେଥିପାଇଁ subsidies को भी आपन को constant रखिया पड़िवो if you want to prove law of supply. Okay. Now finally change in technology. जदि technology रे जदि improvement हला ताले price remaining constant, the quantity supply will increase. जदि technology रे improvement हला then price remaining constant, the quantity supply will increase. जदि technology, okay, so size of the market, if size of the market increases, then price remaining constant, supply will increase. If size of the market decrease, then price remaining constant, supply will decrease. Okay. Now finally goals. Please help me understand this. Please help me understand these goals. When the goal of any producer is profit maximization, then what will happen to the quantity supply? ଆପଣ suppose ଗୋଟେ producer, suppose you are a producer, ଆପଣ ଗୋଟେ producer ଯେ ଆପଣ suppose ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ produce କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ motive ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ goal ହଉଛି profit maximization, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ profit କୁ earn କରିବେ, then given the goal of profit maximization, will you increase the quantity supply or will you decrease the quantity supply? कौन हबो? Decrease. You will decrease the quantity supply. काहेकि जदि market रे supply जदि कमी जाए ताले ही price बढ़िबो, goods रो price बढ़िबो, आ जदि goods रो price बढ़े, actually goods रो price बढ़ला माने producer कोन बेसी रो बेसी profit margin profit earn करि परिबो. So when the goal of any producer is profit maximization, then the quantity supply will reduce when the goal is profit. But when the goal of any producer is welfare, what will happen to the quantity supply? Quantity supply will increase, price remaining constant. इमिता गोटे producer ना कोई परिवे जार goal होची welfare, profit नहीं. Can you name a producer? Can you name a producer whose goal is to earn? Sorry, whose goal is to promote welfare rather than earning profit? Any such producers? Ambani. Ambani रो goal कौन? What is the goal of Ambani's? To earn profit or to promote welfare? What is the goal of Ambani's? What is the goal of Tata's? What is the goal of Jindal? What is the जो जैसे वो tycoons अछंती समान का goal कौन? What is their goal? Profit earn करियो ताको goal. हाँ, कौन.
Sir, both profit and welfare. 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 Sir, profit. Sir, Hmm. profit and welfare did answer. Welfare केमती हम बुझी परिबे कहि परिबे मते welfare केमती ला तांको गोल Sir, तांकर जो CSR contribution था है ताकू सोसाइटी यूटिलाइज करंती. सीएसआर कंट्रीब्यूशन तांकर सेटा तांकर मोटिव ना तांको गवर्नमेंट बाध्य करछि ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତ ଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ବାଇ ଲରେ ଆଗରୁ ଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର 2% ପ୍ରଫିଟ 2% ସେ CSR ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ ବୋଲି. हम सेटा ही पचारछि सीएसआर टा से माने तांको इच्छा रो करूछन ना गवर्नमेंट तांको बाध्य करछि ତ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଟା. गवर्नमेंट बाध्य करछि ना सो दैट मींस देयर मोटिव देयर प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट बुझि पारले देयर प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट so since their motive is profit maximization if they want to earn more profit then they will reduce the quantity supply of any good okay तो वर्तमान मते कोहंतु गोटे प्रोड्यूसर ना कोहंतु जार मोटिव होची वेलफेयर please name a producer whose motive is to promote welfare and not profit earn profit please name such producer Government. Government is the only producer. Government is the only producer whose motive is not to earn profit but to promote welfare. Okay. So, in order to promote welfare, the government will try to increase the supply of any good or service given its price, or you can say the price remaining constant. Okay. So, this is all about non-determinants of demand, non-price determinants of demand and non-price determinants of supply. Now let's come to this market equilibrium. So हमें law of demand देखले, law of supply देखले. Okay. See here. एटे देखंतु एटा बुझिबा तापर हमें जिबा elasticity of demand. मु elasticity of demand आज सारी की ही बंद करिवे ना. Next class रो हमें national income inflation देखियो. Okay, see here. Market equilibrium. See. Now we are discussing what? Market equilibrium. Market equilibrium एटा कोन लेखा है आपण मन देखिबे. मु आपन को डायग्राम थ्रू बुझाउची. देखो हमें लॉ ऑफ डिमांड देखले लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली सेज दैट when price increase quantity demand decrease when price decrease quantity demand increase that means the demand curve actually slopes downward the demand curve actually slopes downward अच्छा एटे देखु थांतु मुझे एरो मार्क करूची मु एरो देखौची ओके कर्सर देखौची देखु थांतु the demand curve slopes downward ता माने डाउनवर्ड स्लोप कोन पई काई ना प्राइस इंक्रीज करले डिमांड कमुची प्राइस डिक्रीज करले डिमांड बढ़ुची ओके this is demand curve this is supply curve this is supply curve okay supply curve slopes upward from left to right which shows that as price increase quantity supply will increase as price decrease quantity supply will decrease now the question is जे कोनसी गोटे गुड नहीं जांतु जे कोनसी गोटे गुड आपण दुनिया रे केते आपण जीवन रे केते गुड यूज करछन गोटे बॉटल हे गला गोटे पेन हे गला गोटे लैपटॉप हे गला गोटे गाड़ी हे गला ड्रेस हे गला क्लोथ्स हे गला केते प्रकार गुड यूज करछंती तो आपण मन को कोन लागुची गोटे गुड रो प्राइस केमिति डिटरमाइन करा जाय हाउ द प्राइस ऑफ एनी गुड इज डिटरमाइंड इन द मार्केट गोटे गुड रो प्राइस आपण गोटे बॉटल किनु गोटे पानी बॉटल किनुचंदी 20 टका देई 10 टका देई से बॉटल रो प्राइस एक्चुअली केमिति डिटरमाइन करा जाय हाउ द प्राइस ऑफ एनी गुड इज डिटरमाइंड the price of any good is determined through the interaction of demand curve and supply curve जो point रे demand curve और supply curve intersect करंती परस्पर सहित suppose this is the point arrow देखा जाऊ समस्त को this is the point at which the demand curve is intersecting with the supply curve and this point of intersection is called the point of equilibrium and corresponding to this point of equilibrium we have an equilibrium price so this price is called as equilibrium price this is the price which is the price of any good or service जो पॉइंट रे डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करे करेस्पोंडिंग टू दैट पॉइंट हमक गोटे प्राइस मिले जोटा को हमें इक्विलिब्रियम प्राइस कहू आ मार्केट रे आपण जे कोनसी गुड किबा सर्विस किनुचंती से गुड रो जो प्राइस आपण पे करूचंती दैट प्राइस इज दिस प्राइस एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस या कोई कुआ जाय कोन इक्विलिब्रियम प्राइस or you can call it as a
मार्केट प्राइस या कोई कुआ जाए मार्केट प्राइस तो जे कोनसी गोटे गुड किंबा सर्विस रो प्राइस सेतेबेले सेट हुए जेतेबेले डिमांड कर्व आउ सप्लाई कर्व परस्पर सहित माने इंटरसेक्ट करंती दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो ए प्राइस रे केवल ए क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करा जाए also you need to understand that this price PE which is our equilibrium price this equilibrium price is also called as market clearing price this equilibrium price is also called as market clearing price what do you mean by this market clearing price one of the most important things to understand in economics this market clearing price देखो तो जो price जो point रे at this point this is our point of equilibrium corresponding to this point of equilibrium we have a price called equilibrium price and corresponding to this point of equilibrium we have a quantity called as equilibrium quantity now this price is called as market clearing price मु वर्तमान गोटे स्टेटमेंट कहबी से स्टेटमेंट को ध्यान से सुनंतु आपण माने भितर बहुत जण मो क्लास करथिबे आ से स्टेटमेंट को सुनिथिबे मु आउ थरे कहूची से स्टेटमेंट आ सुनंतु देखंतु बुझी परछन ना प्लीज हियर प्लीज लिसन केयरफुली सुनंतु market clearing price means that price at which there is no producer there is no supplier in the market or you can say there is no producer in the market whose product has not been sold I repeat market clearing price is that price at which there is no producer in the market whose product has not been sold there is no producer in the market whose product has not been sold there is no consumer in the market whose demand has not been fulfilled ये स्टेटमेंट माने बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं के बुझी पारले नहीं प्लीज मत कोन मुझे स्टेटमेंट कहली मार्केट क्लियरिंग प्राइस means that price at which there is no producer in the market whose product has not been sold there is no consumer in the market whose demand has not been fulfilled ता माने जेते लोको से मार्केट रे थिले समस्तंकर डिमांड फुलफिल हे गला जेते प्रोड्यूसर से मार्केट रे थिले समस्तंकर प्रोडक्ट बिक्री हे गला ता माने जेते की क्वांटिटी सप्लाई थिला सेते की क्वांटिटी डिमांड थिला ता माने वर्तमान मार्केट रे नाही आउ को प्रोड्यूसर अछि नाही आउ को कंज्यूमर अछि दैट मींस द मार्केट हैज क्लियर्ड itself there is no unsatisfied producer in the market there is no unsatisfied consumer in the market that means both producers as well as all the consumers are fully satisfied and the market has cleared itself market खाली हे गला market कोन हे गला खाली हे गला जेते सब प्रोड्यूसर्स मानन पाखरे जेते सब सप्लाई थिला सब सप्लाई क्लियर हे गला जेते लोक माने कंज्यूमर्स माने डिमांड करथले समस्त डिमांड फुलफिल हे गला आ मार्केट ता क्लियर हे गला किंतु मार्केट निजको केतेबेले क्लियर करे when the market clears itself the market actually clears itself at equilibrium price the market actually clears itself at equilibrium price PE the market actually clears itself at equilibrium price PE बुझि परछन्ते एई प्राइस रे ही मार्केट निजको क्लियर करे सेति में आप कोन कुआ जाय इक्विलिब्रियम प्राइस भी कुआ जाय किंबा याको मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कुआ जाय एति की बुझि पाले this is market equilibrium एति की बुझि पाले समझते हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay fine the market actually clears itself on this now this is showing equilibrium using supply and demand curves okay बर्तन आपण एटा को पढिबे so this is all about this and now let's come to elasticity of demand please just a minute second elasticity of demand what is that देखो आज तो मु सपोज जल्दी छाड़ देबी किंतु नेक्स्ट क्लास रे जदी हबो हमें चेष्टा करिवा हां 2.5 आवर्स किंबा 3 आवर्स करिया है ना आपण माने समस्त लागु छी आपण मानन को कोन माने आपण संभाली परिबेनी क्या माने पेशेंस रहइबनी ओके फाइन
से 3 hours करवानी 2.5 hours करियो नेक्स्ट क्लास से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने कोन समस्त बुझिचंती व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुझिचंत ना बुझिनांती व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके देखो गोटे रबर अच्छी रबर रबर जानते देयर इज रबर 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 आपण देखिथिबे आपण जीवन रे इलास्टिक रबर भी देखिथिबे इन इलास्टिक रबर भी देखि तमन जदि आपण गोटे रबर को स्ट्रेच करचंती रबर को टाणुचंती जदि स्ट्रेच हेई पाउनी रबर ता जदि स्ट्रेच हेई पाउनी तल ताको हम कोन कहबा इलास्टिक ना इन इलास्टिक जदि गोटे रबर स्ट्रेच हेई पाउनी आपण बहुत फोर्स लगाउचंती बहुत फोर्स देकी रबर टा को स्ट्रेच करबा को चेष्टा करूचंती किंतु आपण रबर टा स्ट्रेच होउनी ताले रबर टा इलास्टिक ना इन इलास्टिक रबर टा इलास्टिक ना इन इलास्टिक रबर इज इन इलास्टिक जदि बहुत मैक्सिमम बहुत फोर्स दउचंती आपण फोर्स देकी रबर को स्ट्रेच करबा को चेष्टा करूचंती किंतु रबर स्ट्रेच होउनी दैट मींस द रबर इज इन इलास्टिक आउ आपण मिनिमम फोर्स विथ अ नेग्लिजिबल फोर्स रबर टा बहुत स्ट्रेच हेई पारुची with negligible force rubber टा बहुत stretch हेई पारुची ता माने rubber is elastic एटा होची इलास्टिसिटी रो कांसेप्ट जो आमे जेमिति एठी रबर रो इलास्टिसिटी को मेजर कले बाय यूजिंग फोर्स को यूज करिकी आमे रबर रो इलास्टिसिटी को मेजर करूचे आपण मैक्सिमम फोर्स दउचंती रबर स्ट्रेच होउनी ता माने रबर टा होची इनइलास्टिक आपण नेग्लिजिबल फोर्स दउचंती रबर टा स्ट्रेच हेई पारुची सेटा माने रबर टा होची इलास्टिक फर्स्ट केस रे इनइलास्टिक सेकंड केस रे इन इलास्टिक दैट मींस वर्तमान एठी आपण रबर रो इलास्टिसिटी को मेजर करले बाय यूजिंग फोर्स सेमिति एग्जैक्ट सिमिलरली आपण डिमांड जो कांसेप्ट अछि डिमांड रो इलास्टिसिटी को भी मेजर करि परिबे अब जेमिति आपण रबर रो इलास्टिसिटी को मेजर करले बाय यूजिंग फोर्स सेमिति आपण डिमांड रो इलास्टिसिटी भी मेजर करि परिबे बाय यूजिंग प्राइस को यूज करिकी आपण डिमांड रो इलास्टिसिटी को भी मेजर करि परिबे बुझि परछन समस्ते केमिति देखंतु केमिति सपोज आपण मैक्सिमम फोर्स देला परे भी रबर जदि स्ट्रेच होनी तल ताको हमें कोन कहबा इनइलास्टिक कहबा वर्तमान हमें डिमांड रो इलास्टिसिटी को मेजर करबा नाउ लेट्स मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो जो ये जो लिखा है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अछि गोटे होची प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने होची डिमांड रो इलास्टिसिटी को मेजर करबा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने होची डिमांड रो इलास्टिसिटी को मेजर करबा बाय यूजिंग प्राइस को यूज करिके आपण डिमांड रो इलास्टिसिटी को मेजर करिबा सिमिलरली इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अछि तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केस रे आपण इनकम को यूज करिके डिमांड रो इलास्टिसिटी को मेजर करिबा सिमिलरली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अछि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस ए केस रे आपण सब्स्टिट्यूट गुड्स को नहीं की डिमांड रो इलास्टिसिटी को मेजर करिवे बुझ पारल किंतु बट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू फोकस ओनली ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आउ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मु आपन को ऊपर छाडुची जदि आपण प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो कांसेप्ट को बुझी परचंती ताले इनकम इलास्टिसिटी आउ क्रॉस इलास्टिसिटी को भी भलसे बुझी परिबे ओके Now let us understand what is this price elasticity of demand. जेमिति आमे रबर रो elasticity measure करलु by using force. Similarly, we can measure the elasticity of demand by using price. Now let's say law of demand कहूची जदि प्राइस बढ़ी जाए law of demand कहूची जदि प्राइस बढ़ी जाए ताहले क्वांटिटी डिमांड फॉल करिवो किंतु जदि प्राइस बढ़िला परे भी जदि क्वांटिटी डिमांड फॉल न कला ता माने आपण
एटी प्राइस को नहीं जानतु कौन फोर्स टेक प्राइस एज फोर्स एंड टेक डिमांड एज रबर डिमांड को रबर बोली धर नियंतु प्राइस को फोर्स बोली धर नियंतु एटी प्राइस बढ़ी जाइछि किंतु डिमांड चेंज होउनी डिमांड कमुनी डिमांड जेतिकी थिला सेतिकी ही अछि गोटे लोक जेतिकी आगु डिमांड करूतला गोटे गुड रो वर्तमान ता से गुड रो प्राइस बढ़िला परे भी सेतिकी ही डिमांड करूची ता माने डिमांड ता इलास्टिक ना इनइलास्टिक माने गोटे लोक गोटे माने प्राइस को नहीं जानतु फोर्स ता माने फोर्स पडुची किंतु रबर जमार स्ट्रेच होउनी ता माने प्राइस इंक्रीज करूची किंतु डिमांड चेंज होउनी डिमांड जहा थिला से ही अछि ता माने डिमांड ता इलास्टिक ना इनइलास्टिक Inelastic. डिमांड इलास्टिक ना इनइलास्टिक हेलो अदर स्टूडेंट्स सपोज गोटे लोक ओके गोटे लोक दिन को दीटा इंसुलिन नौची जाको डायबिटीज अछि से दिन को दीटा इंसुलिन नौची आउ गोटे इंसुलिन रो प्राइस होउची सपोज लेट्स से 500 तो दिन को दीटा इंसुलिन नौची लेट्स से 1000 टका खर्च करूची इंसुलिन तो वर्तमान धर नियंतु इंसुलिन रो प्राइस बढ़ी की हे गेला 500 टू हे गेला 1000 द प्राइस ऑफ इंसुलिन हैज इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 1000 हे गेला तो वर्तमान जेहेतु प्राइस इंक्रीज करची माने तामान धर नियंतु फोर्स पड़ला वर्तमान तो फोर्स जदि पड़ुची तो रबर टा स्ट्रेच होबा कथा तामाने जदि प्राइस बढ़ुची ताले डिमांड कमिबा कथा किंतु प्राइस बढ़िला परे भी से लोको एबे भी दीटा इंसुलिन ही यूज करूची दीटा इंसुलिन ही कंज्यूम करूची ता माने प्राइस बढ़िला परे भी डिमांड चेंज हो नहीं ता माने दैट मींस द डिमांड फॉर इंसुलिन इज इनइलास्टिक हमें कौन कहबा डिमांड फॉर इंसुलिन इज इनइलास्टिक बुझी पारले ना बुझी पारले नहीं हमें एटी कहबा डिमांड फॉर इंसुलिन इज इनइलास्टिक कहीं कि ना इंसुलिन रो प्राइस बढ़िला परे भी इंसुलिन रो डिमांड चेंज हो बुझी पारले तो इंसुलिन रो डिमांड कहीं भी चेंज होनी कहीं कि ना इंसुलिन इज अ नेसेसरी गुड इंसुलिन इज अ नेसेसरी गुड कहीं ना जदि प्राइस बढ़िवा जोगु जदि से इंसुलिन रो इंटेक जदि कमे दबो ताले चांसेस अछि कोन तार डेथ हे जाइबा सेति पई नेसेसरी गुड्स रो डिमांड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज इनइलास्टिक जेते सब नेसेसरी गुड्स अछि तांको डिमांड ता मोस्टली रिमेन्स इनइलास्टिक नेसेसरी गुड्स रो प्राइस बढ़िले भी नेसेसरी गुड्स रो डिमांड बहुत कमे नाही मोस्टली रिमेन्स इनइलास्टिक आई होप हम समस्त बुझि पाछन एबे सेम एग्जांपल नियंतु इंसुलिन इंसुलिन द प्राइस होची 500 आ गोटे लोक दीटा दिन को दीटा इंसुलिन कंज्यूम करची दीटा इंसुलिन कंज्यूम करची जदि इंसुलिन द प्राइस 500 रु जदि फॉल करी गेला टू 100 रुपीस थिला गोटे इंसुलिन द प्राइस 500 एबे फॉल करी गेला टू 100 तो फॉल करी जिबा जगु लॉ ऑफ डिमांड कोन कहूची लॉ ऑफ डिमांड कहूची प्राइस फॉल करला माने डिमांड बढ़िबा कथा किंतु जो लोक दिन को दीटा इंसुलिन कंज्यूम करतला एबे प्राइस फॉल कला परे भी से वर्तमान दीटा ही इंसुलिन कंज्यूम करूची ता माने प्राइस फॉल कले भी डिमांड चेंज हो नाही काहे कि बिकॉज द डिमांड फॉर इंसुलिन इज इनइलास्टिक प्राइस बढ़ू किबा प्राइस कमू डिमांड चेंज हबो नाही जो गुड रो प्राइस जो गुड रो डिमांड प्राइस बढ़िले किबा प्राइस कमिले चेंज होए नाही से गुड रो डिमांड को हमें कहू इनइलास्टिक डिमांड the good for that demand is inelastic the demand for that good is inelastic जेमति medicines रो प्राइस बढ़िले भी लोक माने तांको डिमांड कमांतिनी मेडिसिन रो प्राइस कमिले भी लोक माने तांको सेही मेडिसिन रो डिमांड बढ़ांतिनी से माने जेति की कंज्यूम करथले सेति ही कंज्यूम करंती सेति पई डिमांड फॉर मेडिसिन्स इज इनइलास्टिक इन नेचर Similarly, salt नहीं जानतु the demand for salt is inelastic in nature. Salt रो जदि प्राइस बढ़ी जाए तले आगुरु जदि आपण गोटे दिन को 50 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करथले तले एबे भी सेठी कंज्यूम करिवे जदि सॉल्ट रो प्राइस कमी जाए ताहेले भी आपण से 50 ग्राम ही कंज्यूम करिवे आपण इंटेक बढ़ाइबे नहीं why because the demand for salt is inelastic बुझी पाछन ना बुझी पाउन सिमिलरली आउट एग्जांपल नहीं जानतु the demand for crude oil India जान आपण जानि थिबे जे इंडिया
जेतिकी क्रूड ऑयल रो जेतिकी क्रूड ऑयल रो कंजम्पशन होची इंडिया रे तार 85% एक्चुअली इंडिया बाहर इंपोर्ट करे 85% बाहर इंडिया इंपोर्ट करे बुझिपारले एबे जदि इंटरनेशनल मार्केट रे जदि क्रूड ऑयल रो प्राइस बढ़ी जाए इंटरनेशनल मार्केट रे जदि क्रूड ऑयल रो प्राइस जदि बढ़ी जाए देन व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर क्रूड ऑयल कोन इंडिया तार क्रूड ऑयल रो डिमांड कमे दबो ना इंपोर्ट कमे दबो कि जदि क्रूड ऑयल रो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट रे जदि बढ़ी जाए ताहले इंडिया कोन क्रूड ऑयल रो इंपोर्ट कमे दबो कि हां कि ना यस और नो यस और नो हां कि ना कहि दियो एटलीस्ट No. हां No, sir. no that means the demand for crude oil is inelastic in nature क्रूड ऑयल रो प्राइस इंटरनेशनल मार्केट रे बढ़िले भी इंडिया क्रूड ऑयल रो डिमांड कमे पारिबो नाही बिकॉज द डिमांड फॉर क्रूड ऑयल इज इनइलास्टिक इन नेचर सेतिबे हम कहि परिबा द इंपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल इज इनइलास्टिक इन नेचर बुझ पड़छ एटी फोर्स कोन एटी फोर्स होची प्राइस सिमिलरली गोटे गुड अच्छी जार प्राइस सपोज धर नियंतु गोल्ड गोटे गोल्ड धर नियंतु गोल्ड रो प्राइस मार्केट रे बढ़ी गला व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर गोल्ड लोक माने गोल्ड रो डिमांड कमे देबे ना गोल्ड रो प्राइस बढ़िबा जगु गोल्ड रो डिमांड बढ़ी जिवो ना गोल्ड रो डिमांड कमी जिवो प्राइस बढ़िबा जगु यदि गोल्ड रो प्राइस यदि मार्केट रे बढ़ी जाए व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर गोल्ड डिमांड कौन हो गोल्ड डिमांड एक्चुअली कमी जीवो गोल्ड डिमांड कमी जीवो बिकॉज गोल्ड इज नॉट अ नेसेसरी गुड गोल्ड इज अ लग्जरी गुड एबे सपोज कार रो जदी प्राइस मार्केट रे बढ़ी जाए त लोक माने कार रो डिमांड कमी देबे बिकॉज कार इज नॉट अ नेसेसरी गुड कार इज अ लग्जरी गुड बुझि पड़छ ना बुझि पड़नांती ता माने मु कहबा माने होउची जो गुड रो प्राइस बढ़िले डिमांड कमी जाउची किंबा प्राइस कमिले डिमांड बढ़ी जाउची द डिमांड फॉर सच गुड्स इज इलास्टिक इन नेचर जो आउथरे कहूची जदि जो गुड्स गुडाकर प्राइस बढ़िले डिमांड कमी जाउची किंबा प्राइस कमिले डिमांड बढ़ी जाउची से गुड्स रो डिमांड होउची इलास्टिक किंतु जो गुड्स रो प्राइस बढ़िले किंबा कमिले डिमांड जेतिकी थिला सेतिकी ही रहउची से गुड्स रो डिमांड होउची इनइलास्टिक इन नेचर तो इलास्टिक और इनइलास्टिक भीतर डिफरेंस बुझी पारथबे मु होप करूची आशा करूची इलास्टिक कोन इनइलास्टिक बुझी पारले जेमति मेडिसिन्स रो डिमांड होउची इनइलास्टिक काहे कि ना मेडिसिन्स रो प्राइस बढ़ू किंबा कमु मेडिसिन्स रो डिमांड कमिबोनी जेतिकी लोक कंज्यूम करथले सेतिकी ही कंज्यूम कर सॉल्ट भी डिमांड होउची इनइलास्टिक खास करी कि मोस्ट ऑफ द नेसेसरी गुड्स रो डिमांड होउची इनइलास्टिक सिमिलरली लग्जरी गुड्स रो डिमांड इज ऑलवेज इलास्टिक जिते प्रकार लग्जरी गुड्स अच्छी सब लग्जरी गुड्स डिमांड होची इलास्टिक कहीं तांको प्राइस बढ़िले मार्केट डिमांड कमी जाए प्राइस कमिले मार्केट डिमांड बढ़ी जाए दे आर इलास्टिक नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड न्यूमेरिकली एट देखंतु व्हाट इज द formula for this price elasticity of demand formula कौन The formula is percentage change in quantity upon percentage change in price. Percentage change in quantity upon percentage change in price. से छोटो एग्जांपल मैं आपन को दोउची देखंतु जदि सपोज मेडिसिन द प्राइस इंक्रीज करिछि by 10% मेडिसिन द प्राइस इंक्रीज करछि by 10% ताले डिनोमिनेटर रे केते लेखा हो 10% किंतु क्वांटिटी जमारो चेंज हेनी ताले व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी 0% चेंज इन क्वांटिटी केते 0% चेंज इन प्राइस केते प्राइस एक्चुअली बढ़ी जाई by 10% ताले 0 upon 10% वैल्यू केते आरिबो 0 so whenever the value of price elasticity of demand is 0 whenever the value of price elasticity of demand is 0 we can conclude that the demand for that good is perfectly inelastic जदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो वैल्यू 0 भारला ताले से गुड रो डिमांड को हमें
perfectly inelastic demand कहू से गुड रो डिमांड को हमें perfectly inelastic demand कहू एते कि बुझी पाउछन समस्ते बुझी पाउछन ना बुझी पाउना okay now let's say the price of any good has decreased by 10%. धर नियंतु मेडिसिन द प्राइस वर्तमान डिक्रीज कर जाइछि 10%, किंतु क्वांटिटी जमार चेंज हेनी, द चेंज इन क्वांटिटी इज 0%, ताल डिनोमिनेटर रे केते आसीबो 10%, न्यूमरेटर रे केते आसीबो 0, so 0 upon something is 0, that means the demand for that good is perfectly inelastic. जदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो वैल्यू 0 बाहरला ता माने से गुड रो डिमांड ता होची परफेक्टली इनइलास्टिक कुहा जाय. ओके now जदि suppose price has changed, let's say price has increased by मु जहा जहा कहूची ध्यान से सुनंतु काहे ना मु न्यूमेरिकली आपन को बुझिया चेष्टा करूची बोर्ड रे त लिखि परिबिनी मो राइटिंग पैड नेक्स्ट क्लास तो नै कि आसीबी किंतु वर्तमान मु न्यूमेरिकली कहूची सुनंतु हला चेष्टा करंतु जोटी बुझि परिबी मते पछारी. ओके देखंतु सपोज the price has increased by 10%, जदि प्राइस 10% इंक्रीज करि जाइछि आउ क्वांटिटी डिमांड has decreased by 5%. जदि प्राइस actually has increased by 10%, quantity demand has decreased by 5%. The law of demand, according to law of demand, price बढ़िले quantity demand fall होबा दरकार. तो एटी क्वांटिटी डिमांड फॉल होउची किंतु केते परसेंट फॉल होउची केवल मु कहूची 5% फॉल हला किंतु प्राइस केते परसेंट इंक्रीज करला प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 10% whereas quantity demand has decreased by 5%. ता माने फार्मूला केते आसीबो रिजल्ट 5 upon 10 change in quantity is 5, change in price is 10%, so 5 upon 10 तल केते आसी डेसिमल रे आसीबो लेस देन 1 आसीबो वैल्यू केते आसी 0.5 1/2 0.5 आसीबो वैल्यू. If the price elasticity of demand, if the value of price elasticity of demand is less than 1, then the demand for such good is inelastic. जदि price elasticity of demand रो value जदि less than 1 आसे ताले आमे से good रो demand को कहिबा inelastic demand. जदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो वैल्यू 0 आसे ताले हमें से गुड रो डिमांड को कहिबा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. जदि 0 परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. जदि लेस देन 1 then we call it as less than 1 but greater than 0. जदि वैल्यू आछि less than 1 but greater than 0, for example 0.5 वैल्यू आसला, then we will call it, we can say that demand for that good is inelastic in nature. एबे आउथरे एग्जांपल देखंतु जदि प्राइस फॉल करिछि बाय 10%, क्वांटिटी डिमांड हैज इंक्रीज्ड बाय 5%. एटी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करछि किंतु केते परसेंट इंक्रीज करछि 5% इंक्रीज करछि, प्राइस केते फॉल करछि 10% फॉल करछि, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो वैल्यू केते आसीबो अगेन 0.5 आसीबो वैल्यू. ता माने लेस देन 1 ग्रेटर देन 0. Whenever the value of price elasticity of demand is greater than 0 but less than 1, then the demand for such good is inelastic. एतिके मन रखंतु. Now let's say the price has increased by 10%, whereas quantity demand has fallen by 20%. price बढ़िवा जगु quantity demand fall करूची किंतु क्वांटिटी डिमांड केते फॉल करूची 20% फॉल करूची, प्राइस केते बढ़ीची 10% फॉल करची, ताले न्यूमरेटर रे केते आसीबो 20%, डिनोमिनेटर रे केते आसीबो 10%, ताले वैल्यू केते आसीबो 2 आसीबो. दैट मींस whenever the price elasticity of demand, whenever the value of price elasticity of demand is greater than 1, then the demand for that good is elastic in nature. जदि greater than 1 अछि वैल्यू ताले हमें कहबा the demand for that good is elastic. जदि less than 1 अछि value but greater than 0, we call the demand for that good is inelastic in nature. जदि value 0 आसिला ताले हम कहबा जे the demand for that good is perfectly inelastic. I hope आपण बुझि परछन. देखंतु एठी please try to understand these things graphically. देखंतु perfectly inelastic demand केस रे कोन होछि देखंतु the value of price elasticity of demand is 0.
whenever the value of price elasticity of demand is 0, we call it as perfectly inelastic demand. Graphically देखो, see here price and quantity demand. Price थिला P, quantity केते अछि Q. Price increase है कि हेगला केते P1. वर्तमान भी quantity केते अछि Q. ता माने price has increased करूची किंतु quantity demand 0. That means the value of price elasticity of demand is 0. That means the demand for this good is perfectly inelastic. वर्तमान देखो price थिला P1, price fall करिगला to P. P1 ରୁ fall कला price P किंतु quantity केते अछि Q. ता माने quantity change होनी. Again the value of price elasticity of demand is 0. That means the demand for this good is perfectly inelastic in nature. बुझी पर आपण आशा करछि बुझी परछु. Second, perfectly elastic परे आसी टिके हम परे आसी. Now see here. Inelastic demand काहा को कुहा जाय? Inelastic demand मु कोन कहितली, if the value of price elasticity of demand is greater than 0 but less than 1, then the demand for that good is inelastic in nature. देखो तो एटी कौन होउची inelastic in nature. See here. Look at the diagram. देखो तो एटी P, the price, let's say the price has increased. Let's say the price has increased from P to P1. धरि नियंतु एटी price increase करची by 10%. Let's say the price has increased by 10%. किंतु the quantity demand has fallen. Price increase करिवा जोगु quantity भी fall करि जाईची from Q to Q1. Price थिला जेतले थिला P, quantity demand थिला Q. Price increase करि जाईची to P1, quantity demand has fallen to Q1. किंतु एटी धरि नियंतु price increase करची by 10%, whereas the quantity demand has fallen by 5%. आपण देखि परथुवे गैप ता बहुत स्मॉल अछि, एटी गैप ता बहुत बिग अछि, बड़ अछि गैप ता. ता माने प्राइस ता बेसी चेंज करची, क्वांटिटी डिमांड ता कम फॉल करची. ताले जदि प्राइस चेंज हेची, प्राइस इंक्रीज करची by 10%, whereas the quantity demand has decreased by 5%, then according to formula 5% upon 10%, so 5 upon 10 is 1 by 2, 1 by 2 is equal to 0.5. That means the value of price elasticity of demand is less than 1. That means the demand for that good is inelastic in nature. You can see here the demand curve for perfectly inelastic in nature. The demand curve for perfectly inelastic good. जो goods केस रे demand ता perfectly inelastic थाए, से केस रे demand curve रो shape देखंतु. Demand curve रो shape कोन? Demand curve shape होउची parallel to y axis or perpendicular to x axis. That means it's a vertical line. It's a completely vertical line. The demand curve is completely vertical in nature. If the price elasticity of demand is 0, then the demand curve becomes completely vertical in nature. किन्तु आपण कहि परिबे parallel to y axis किबा एति बुझि परछन्ती vertical. But whenever the value of price elasticity of demand is greater than 0 or less than 1, then the demand curve is the shape of demand curve is actually slopes downward. Demand curve is relatively vertical in nature. याको कौन कुआ जाए? एटा completely vertical तो नुहे, याको कुआ जीवो relatively vertical in nature. किंबा the demand curve is steep in nature. जदि perfectly inelastic demand अछि, ताले demand curve रो shape होबो कोन? Vertical. जदि inelastic demand अछि, ताले demand curve रो shape होबो कोन? Steep in nature or relatively vertical. This is relatively vertical shape. Relatively vertical. Okay, not completely vertical but relatively vertical. याको कुहा जाए. एटा आपण बुझी परछन मु आशा करछि. Now let's come to elastic demand. If the value of price elasticity of demand is greater than 1, for example, see here. देखंतु. यदि price, let's say price has increased by 10%. Price एटी increase करछि by 10%, whereas quantity demand has decreased by 20%. So according to formula, change in quantity upon change in price, the 20 upon 10 is equal to 2. That means 2 is greater than 1. So whenever value of price elasticity of demand is greater than 1, the demand for that good is elastic in nature. The demand for that good is elastic in nature, elastic demand. What is the shape of demand curve? The shape of demand curve is relatively flat. याको हमें relatively vertical demand curve कहबा नहीं. एठी हमें जो demand curve shape अछि, याको हमें कोन कहबा? That shape of this demand curve is relatively flat in nature. But here
the shape of demand curve is relatively vertical in nature, relatively steep in nature, and here the demand curve is completely vertical in nature. Jadi less than 1, then the shape of demand curve is relatively steep or relatively vertical in nature. Then if greater than 1, the demand curve is relatively flat in nature or relatively horizontal in nature. Okay. Now we have this rectangular hyperbola. Jadi quantity भी change होची, quantity suppose change होची 5%, price भी जदी change होची 5%, quantity change होची 5%, demand भी change होची 5%, then what would be the value of price elasticity of demand? केते value आ रही हो? यदि quantity भी change होची 5%, price भी यदि change होची 5%, ताले केते ताले price elasticity of demand रो केते value आ रही हो? 1. 1. जेतेबळे whenever the value of price elasticity of demand is 1, you will get a shape like this. This is called rectangular hyperbola. This is called rectangular hyperbola. देखो तो price has increased by 5% or decreased by 5%. Quantity demand has changed by 5%. तार माने value of price the value of price elasticity of demand is 1. Then the shape of demand curve is rectangular hyperbola. Okay. Now finally see perfectly elastic demand. This is perfectly elastic demand. That means whenever the value of price elasticity of demand is infinity, जेतेबळे price elasticity demand जेतेबळे whenever the value of price elasticity of demand is infinity, then what we have is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand is देखो इमिति यार practical example नहीं. Perfectly elastic रो is a practical example नहीं. एटे देखो तो price अच्छी P. At price, given the price P, the demand is infinite. The demand is infinite. Q being at price P, लोको माने Q भी demand करचुंदी, QX भी demand करचुंदी. The demand is infinite, so we don't have any practical example, any universal or practical example for this perfectly elastic demand. किंतु तथापि मो एठी गोटे एग्जांपल लिखिया चेष्टा करछि जोटा कि आपण माने पढि कि बुझिया को चेष्टा करिवे. ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुझी पारले ना बुझी पारले समझते? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुझी पारले ना बुझी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुझिबाटा. जदि बुझी नांती कोहंतु मु आउथरे बुझेबी. किंतु इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुझिले ही हम आगु जाई परिबो. आज आउ जिबानी, नेक्स्ट क्लास रे जिबा. किंतु आपण माने बुझिले ना बुझिले नहीं? Yes, sir. समस्त टिके रिप्लाई कर दियंतु सो दैट वी कैन वाइंड अप द क्लास. Yes, sir. समस्त बुझी पारले मूलरू? अंकिता बुझी पारले, अर्पिता, विश्वजीत, देवस, दीप्ति, दिलीप, जितेंद्र, मानसी, Yes, sir. मनीषा, प्रियंका, शैलेश, रिया, स्मृति रंजन, स्वीकृति, समस्त बुझी पारले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Yes, sir. Fine. Okay, fine. So from next class onwards, we will start from types of goods. After completing types of goods, there are some more concepts which we will discuss. Then we will complete national income. National income complete karsala for inflation complete karsala for RBI and monetary policy. Then banking. तापरे हमें जिबा banking सरला पर हमें जिबा fiscal policy and taxation, including budget. Then we will go for external sector and balance of payment. Then we will go for poverty, unemployment, inequality. Then planning and reforms. And finally, we will end our session with money market and capital market. Fine. Okay. See you in the next class. Bye.